and the recording start. So once again, good morning to all of you. Let me introduce myself first. My name is Rohan Paramne. That's the spelling. Rohan Paramne. I'm working as a full-time trainer in Sunbeam, having around, we could say, 9+ years of experience into the training domain. So we are going to now start with the new modular batch, we could say, with the core Java, into which you are going to learn all the fundamentals that you require for the basic understanding of the Java. So what we are going to learn into this modular batch. So let us say that for this particular modular batch, we could say for this core Java, we are going to understand the basic concepts of OP. Kya hai OP? Then we will understand the language fundamentals. When you talk about the language fundamentals, so these fundamentals are like how to create the simple programs, what are the basic things, how to write the main, what are the data types into this, we could say Java, how to work with those data types. So all these basics that we are going to talk about. Then we will start entering into the major concepts of the OP into the Java and how it has been implemented. Like into the OP, when you talk about, we could say abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, how that can be implemented into the Java. So that is what we will be looking at. तो ये सारी चीजें भी देखेंगे. Then along with that, whatever the concepts that are being given by the Java. So for example, we could talk about the exception handling mechanism given by the Java. We could talk about the collections from Java. So what is the collection framework, how it works, or how we can start using it as per our requirement. We will be talking about, we could say, the file IO, how to implement that particular file IO in Java. This is what we are going to talk about. Not only that, we will be also talking about some advanced topics into the Java, like the very important one, which is the functional programming. So nowadays, the Java is also moving towards the path of being a functional programming language. So what it is, this is what we have to talk about. To learn this functional programming, we will talk about the Java 8 interfaces. हम लोग Java 8 interfaces क्या है, how it has been changed this entire working of Java from OOP to functional. So this is what we'll be studying. Not only that, at the last, we will be also talking about the technique of reflection. So what is the reflection technique, and also maybe which is going to help you later on in the case of advanced Java, we will be also talking about the annotations. तो हम लोग annotations की भी बात करेंगे. And if you talk about this entire core Java, what we are going to learn and what we are going to understand is all about, we could say, the language fundamentals. It is all about, we could say, how to work with that particular Java, how to start developing the applications into the Java. Maybe it is going to be a kind of, we could say, the desktop level applications, but still you will be getting a really good idea about how to use one particular language to start developing the applications. At the end of this, definitely you are going to get those things. The second purpose of this modular batch is definitely for those students specifically who are targeting, we could say, the main courses, यानी कि जिनको main courses में आना है, they want to pursue the CDAC course. Also for those candidates who wants to give the interviews immediately after this, यानी कि जिनका कुछ past कुछ experience है, let's say 1 or 2 years का experience है, 3 years का experience है, they are trying to upgrade or they are trying to give the interviews. Even for them, even for the students who are going to go for the CDAC courses, even for them. So for all of them, this batch is going to be really helpful. तो उन सभी के लिए definitely ये कहीं ना कहीं helpful होने ही वाला है. This is going to be a really nice journey where you are going to understand each and everything about, we could say, the Java in detail. काफी concepts के ऊपर हम लोग focus करेंगे. And definitely as per the requirement, I will be also giving you the assignments at runtime, so which you can use it to solve it into the next session, or we could say you can solve it by your own. Any difficulty that you are going to have, like if you need some of the explanations, if you have some problems grasping those concepts, यानी कि आपने थोड़ा सा try किया but you have some difficulty and you need help, definitely at the start of the meeting I will be there, and at the end of the meeting I'm going to stay into the meeting. तो जितने भी आपके डाउट्स होंगे कि सर ये मैंने कल का कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ा था, मे बी आई एम हैविंग अ स्मॉल डिफिकल्टी इन टू इट, मे बी थोड़ा सा कंसेप्ट में यहाँ पे प्रॉब्लम है, और मे बी आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व समथिंग, आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है. So we could say definitely the help regarding, we could say, the practicals that you need,
अगेन आई एम गोइंग टू बी देयर, मैं वैसे भी रहने वाला हूँ, आई विल बी देयर इनटू द मीटिंग्स, मैं सुबह पहले भी रहूंगा, सो 15 मिनट्स प्रायर द मीटिंग स्टार्ट्स, देयर यू कैन पोस्ट द क्वेश्चंस. नॉट ओनली दैट, मीटिंग खत्म होने के बाद यानी कि अराउंड 1 p.m. again you can just start posting your questions or you can just ask me the questions and I will continue with the support. So ये भी हो जाएगा. So do not say like it is going to be only a theoretical from one side. ऐसा नहीं होगा. So whatever, even you are having the difficulty, even you are having the queries, even that I'm going to take it. So this is what entirely we are going to work with the core Java. इसके साथ whatever are the concepts of the Java, that also we are going to talk. So now it's time that we go ahead and we start with the concepts specifically of the OOP. We are going to start with the Java. Java से start होना चाहिए. But again, we are going to just quickly recap. Those who know these concepts, it will be a kind of a revision for them. Those who are doing it for the very first time, it is going to be again, we could say, a kind of each and everything in detail. So it is not something that will go on an abstract level. ऐसा नहीं है. It is going to be in detail. So maybe for those who already know, it is going to be a quick revision. Also for the students who are like doing it for the very first time, I could say, not the OP, but the Java for the first time. ऐसा हो सकता है कि sir, we have learned our C, we have learned the C++ way back into our engineering. Maybe we haven't got a touch or hands-on onto the Java programming language. Maybe ऐसे भी students हो सकते हैं who know the C and CPP by doing some of the pre-CAT courses, like the one that has been completed so far, and they are directly coming for the Java. या फिर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिनको C++ नहीं आता है and they are directly coming to the Java. So is it really difficult? The question is like the students ask कि सर क्या Java इतना difficult है? So the answer is no. Java is not difficult. If you compare Java with any other languages, learning Java is comparatively simpler with the other languages compared to the other languages, I could say. कि अगर आप कंपेयर करो, अगर आप जावा को उठा करके इफ यू कंपेयर विद सी, इफ यू कंपेयर विद सी प्लस प्लस, जावा के साथ अगर आप स्टार्ट करते हो, इफ यू स्टार्ट विद योर जावा, यू विल फाइंड इट आउट कि कंपेरेटिवली जावा इज मोर सिंपल. कंपेरेटिवली आई एम सेइंग डेफिनेटली द मोर द डेप्थ यू गो इनटू द जावा, जैसे से आप डेप्थ में जाओगे, डेफिनेटली इट इज अ रैपर ऑन टू द वी कुड से अर्लियर लैंग्वेजेस, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. सो समवेयर डाउन द लाइन यू शुड हैव द आइडिया अबाउट वी कुड से प्रीवियस लैंग्वेजेस. लेकिन when you start with the Java, it is not that difficult. It is very simple, and Java itself says that the Java is simple. So we are going to start with it. You will be definitely understanding it. और जहां जहां पे प्रॉब्लम होगा, make sure to ask it at the right time. तो वहीं पे आप थोड़ा सा यहाँ पे we could say put down कर सकते हो. You can put down your own questions and you can just ask wherever you are going to have some difficulties. Fine. So let us start with the OOP. As we say, the Java is an object-oriented programming language. So let's talk about the OOP concepts. So whatever we could say, the concepts that you know, first you tell me, what do you mean by OOP, or which languages are called as an object-oriented programming languages? I don't want the language names. I want कौन सी languages को generally OOP languages कहा जाएगा. What are the rules of it? Yes. Those who know, you can post the answers into the chat box. No problem. Which languages are called as the object-oriented programming languages? The languages that follow dash 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 dash. Do you know which are the concepts? If you know, that's fine. If you don't know, I will just tell you. Languages that follows. Yes, guys. Abstraction. No. Bottom-up approach, very good. So that is the top-down approach, bottom-up approach. But generally, when you talk about an OP, we talk about any languages that follows these four things. Which are the four things? Abstraction, encapsulation, then inheritance and polymorphism. Generally, whenever you talk about any object-oriented programming language, अगर आप किसी भी object-oriented programming languages की बात करोगे, so as per the definition, as per the basic definition, I could say, any language that follows
abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism generally are considered to be as then object-oriented programming language. चलो ये तो हुआ basic definition. But if I want to talk about a bit in depth, थोड़ा सा अगर मुझे थोड़ा सा डेप्थ में अगर इसकी बात करनी है, so understand it. So OOP concepts given by the Grady Booch. Now, who is Grady Booch? He is one of the pioneer who invented the UML, Unified Modeling Language, that was used to represent the object-oriented programming structures. यानी कि सारे particular we could say development में जो आप सारे classes, जो आप सारी hierarchies या फिर we could say the components that you see, if you want to draw it diagrammatically, so this is where the Unified Modeling Language helps us to understand how the entire thing is been connected or how the entire development has been taken place. तो इस UML को जिसने we could say invent किया, so the Grady Booch, because it was invented for the OOP, he gave the correct definition for an OOP language. He said, whatever the object-oriented programming languages are, they should be following these given major pillars. He divided these concepts. ये जो abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism आप देख रहे हो, he divided those concepts into these two categories. One is called as the major pillar, another is called as the minor pillar. He created these two categories. One is the major pillar, another is the minor pillars. Into the category of major pillars, he added abstraction. Second one is encapsulation. Second one is encapsulation. The third one is modularity. And the fourth one is hierarchy. And last one is hierarchy. Into the case of minor pillars, into the case of minor pillars or into the category of minor pillars, he added typing slash polymorphism, then concurrency, and finally persistence. So he created this entire definition for this object-oriented programming, where he said there are these two categories. One is called as the major pillar, another is called as the minor pillar. Into the major pillars, we have the concepts of abstraction, encapsulation, modularity, and hierarchy. And in the minor pillars, we have typing slash polymorphism, concurrency, and the persistence. So what are these major and what are these minor pillars? Now let us start discussing one by one. अब थोड़ा इनको individually discuss करते हैं. Let us start with the major pillars first. For any object-oriented programming language, understand? For any object-oriented programming language, यानी कि ऐसा कोई भी language which claims to be an object-oriented programming language must follow, or we could say it's compulsory for any OOP. It is compulsory to follow all the major pillars. Again, for any OOP language, कोई भी language अगर claim करता है, if it claims that I am an object-oriented programming language, then it must compulsory follow. उसने compulsory follow करना है. कौन सा? It must follow all the major pillars. Following the minor pillars is totally optional. उसने माइनर पिलर्स में से लेट से वो पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट कर रहा है, कॉन्करेंसी को सपोर्ट कर रहा है, परसिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहा है, whether it's supporting whether it's not supporting doesn't matter, फर्क नहीं पड़ता है. But at least whenever you talk about we could say an OP language, it must follow this major pillars. उसने major pillars को follow करना है. Now what are these major pillars? Now let us start discussing one by one. So let us discuss all about the major pillars. Into the major pillars, the first pillar that we have seen is going to be the abstraction. Do you know what is abstraction? Yes, this PDF file is going to be given to you. Do not worry on to this. ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, even this is going to be given to you, and even this, the agenda, the entire notes that I'm going to share it with you, ये दोनों भी आपको मिल जाएगा. Do not worry on it. ये सब मिल जाएगा. Do you know what is the abstraction? Yes, guys. Abstraction.
You can start just giving the answers, sir. Do not worry. Do not think about वो गलत होगा सही होगा. You're not for it. You are here for learning, and while learning, you can make mistakes. तभी तो आप सीखोगे. Yes, hiding the implementation, hiding the data. Uh, yes, definitely you can just turn on the mic. You can answer it. No problem, Rohini. Hiding unnecessary details, hiding internal things from user. Very good. So let me just simplify it even more. Let me simplify it even more. अब काफी सारा चीजें इसके अंदर, यानी कि व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग द एब्स्ट्रैक्शन, एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि लाइक हाइडिंग समथिंग. बट व्हाई यू आर हाइडिंग इट? आप उसको हाइड क्यों कर रहे हो? अंडरस्टैंड इन दिस वे, व्हाई यू आर हाइडिंग इट. What's the purpose of hiding the details? What is the purpose of hiding the unnecessary details? What's the purpose? The purpose is only one: to give the information or to give the only required information to the user. What is the purpose? आप hide कर ही क्यों रहे हो? The purpose is to getting to know, getting to know only the essential details. What is abstraction? Abstraction is nothing but getting to know only the essential details. यानी कि जितनी जरूरी है सिर्फ उतने ही डिटेल्स क्या होने चाहिए, दैट शुड बी विजिबल टू द यूजर, या फिर उतने ही डिटेल्स उस यूजर को देने, उतने ही डिटेल्स हमें यहाँ पे कैप्चर करने. फॉर सिंपलेस्ट एग्जांपल, लेट्स से this is a laptop or we have a mobile phone. Now for a particular laptop and for a particular mobile phone, as a user, when you look at it, do I need to have any information about how the entire things are getting packed into it? Is there anything that I require to know कि वो RAM exactly किधर रखा गया है? Is it the information that I need कि वो exactly we could say processor कहाँ पे? Do I need to have an information कि वो HDD exactly कहाँ पे? It doesn't matter to me. What matters is what is the particular cost of that laptop, and is that particular laptop having, we could say, an Intel processor of i5, and is it having around, we could say, the 8 GB or we could say 16 GB of RAM as per my requirement. That's sufficient for me. बाकी सारी चीजें वो कैसी बनी है, कहाँ पे रखी गई है, so that doesn't matter. Similarly for a mobile device. So for a mobile device, where the particular battery is, where the particular, we could say, the storage has been built over there, where are the particular, we could say, microphones, it doesn't matter to me. यानी कि उसके internals उसने कैसे structure बना के रखा है. We don't look at those internals to purchase a device. हम लोग उन internals को नहीं देखते to purchase a device. What we look at, only the required information. कि क्या उसके पास कैमरा, लेट्स से एज पर माय रिक्वायरमेंट 50 मेगापिक्सल और 100 मेगापिक्सल है कि नहीं. Maybe the selfie camera is 32 megapixel or no. Maybe we could say the battery is 6000 milliamp or no. Maybe we could say it has the turbocharger or fast charger or no. यानी हम लोग सिर्फ जो required चीजें हैं, only getting to know the essential things about that particular devices, हम लोग सिर्फ इतना ही उठाते and we purchase those devices and we start using it. Whatever are the internal things, everything is hidden from us. Everything is hidden from us. So when you look it from the buyer side, when you look it from, we could say, the user perspective, getting the information, getting only the required information about those components, this is what we call it as an abstraction. इसे हम लोग कहते हैं abstraction. Again, the simplest example is the Java. So when we are going to start with the core Java, when we are going to talk about the Java, is it like you are going to see how the entire Java has been created? No. What you are learning over here is how the Java has implemented the OP and what are the concepts given by Java. वो जावा बना किस तरीके से है, मे बी उस सी प्लस प्लस के ऊपर उसने कैसे पूरे लाइब्रेरीज को क्रिएट किया, हाउ द एंटायर वी कुड से द जेवीएम हैज क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच. यू आर नॉट गोइंग टू लुक एट इट. That means every language that you learn, whether it's a C language, whether it's a C++ language, whether it's a Java language, or any languages, any technologies that you generally learn, you learn it on an abstract level. यानी कि आप बस उन्हीं चीजों को समझते हो जितनी चीजों की जरूरत है फॉर द डेवलपमेंट. यानी कि मुझे अगर लेट्स एक वेब डेवलपमेंट करना है, आई मस्ट नो ओनली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. आई डोंट केयर हाउ इट एग्जीक्यूट्स ऑन टू द ब्राउजर. वो ब्राउजर के अंदर ओएस के ऊपर जाकर कैसे काम करे, यू लिटरली डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, यू डोंट नीड दैट इंफॉर्मेशन. What's the first purpose? I should be able to learn it in 10 days and I should be able to develop something. This is what we call it as an abstraction. Let me know. Is abstraction first of all clear to you? What is abstraction? Is it clear to you first? Yes. Getting to know the essential details. जितनी जरूरत है उतनी ही details को यहाँ पे fetch down करो. Now, if you talk about the technical perspective,
कि अगर आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव में चेक करोगे व्हाट एग्जैक्टली द एब्स्ट्रैक्शन इज और हाउ द लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्शन, सो दिस इज वेयर वी कुड से calling a function whenever you are in C, whenever you are in C++, generally you give a call to the functions. So whatever the call that you give to the functions is an example of an abstraction. Okay, what it is? It's an example of an abstraction. So maybe I can say some examples. So what are the examples? First of all is calling a function. Not only that, creating the objects, creating the objects is an example of an abstraction. आप किसी भी पर्टिकुलर ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन को कॉल करो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्ट इन सी, यू यूज द फंक्शन कॉल्ड एज अ प्रिंटफ. तो ये प्रिंटफ फंक्शन क्या है? हैव यू डिफाइंड दैट फंक्शन? नो. डू यू केयर हाउ द फंक्शन इज डिफाइंड? नो. व्हाट यू केयर इज लाइक हाउ टू कॉल द फंक्शन. यानी कि इफ आई वांट टू कॉल अ फंक्शन प्रिंटफ, आई मस्ट से इट इन दिस वे, प्रिंटफ into the bracket, and I should pass something into the double quotes as a string. Not only that, if I want to print some value, I must be using some format specifiers, and we could say whatever the value that I want to print, give the variable name. यानी कि उस फंक्शन को यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज इट, what are the required details, only this much information you have gathered and you started developing into the C. यानी कि आप C लैंग्वेज को यूज करके you started the development or you started developing the console based application. Tell me, have you started it exactly in the same way? On the day when you started the C, do you care how the function has been defined? No, you don't care it. You just care about how to write the main and how to use the printer. That's it. This is why this is an example of an abstraction. Every time calling a function, functions already defined है. Calling a function, यानी कि laptops already बने हुए हैं, manufactured है. Mobile phones are already manufactured. What you're doing? You are just looking at the details and you are just using it. Exactly the same way. Calling a function or क्लासेस ऑलरेडी बने हुए हैं, स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, एवरीथिंग इज बीन क्रिएटेड. व्हाट यू आर डूइंग इज आप बस उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो एंड यू आर एक्सेसिंग इट्स बिहेवियर. आप उसका डायरेक्टली बिहेवियर को एक्सेस कर रहे हो. सो क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड कॉलिंग द फंक्शंस आर द बेस्ट एग्जांपल्स, द टेक्निकल एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. लेट मी नो, इज फर्स्ट द एब्स्ट्रैक्शन क्लियर टू यू? इज फर्स्ट द एब्स्ट्रैक्शन क्लियर टू यू? यहां तक क्लियर है guys? Very good. Now the second thing, abstraction is not possible. Abstraction sir, is I'm not beginner. Yes. हाँ सर, आई एम बिगनर हूँ, तो सर मुझे कॉल फंक्शन, क्रिएटिंग फंक्शन ये कंफर्म मुझे पता नहीं, तो सर आप प्लीज थोड़ा सा बेसिक, कोई भी लैंग्वेज मुझे नहीं पता सर, अभी बिगनर स्टार्ट जावा से कर रहा हूँ सर. ओके संदीप, टू बी ट्रू, मैं आपको लिटरली बताता हूँ, टू बी ट्रू, we cannot start directly with the C, but for this then you have to just keep some patience. यानी कि unless and until we go into the Java, unless and until we start writing, we could say the code, so it is not possible. So चलो एक अच्छा क्वेश्चन आया from the Sandeep, so let me just even map it in this way. थोड़ा सा I am diverting a topic, but definitely this is really important for you guys to understand. ठीक है? Okay sir. For any particular languages, यानी कि you start with C, you start with C++, or you start with Java, there are some interconnectivities. यानी कि आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ चीजें पता नहीं होनी चाहिए, और जैसे आप स्टार्ट करोगे तो कुछ चीजों को पहले आपको एज्यूम करना पड़ता है, एंड देन लेटर ऑन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ऐसा क्यों किया गया था. इट इज लाइक दिस. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट सी, तो सी में आपको बस सिखाया जाता है, यानी कि इफ यू स्टार्ट विद द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको सिखाया जाता है कि लाइक लुक एट दिस, दिस इज द वे यू राइट इट ऑन द डे वन. सो ये सी का डे वन होता है, वेयर इट इज बीन टोल्ड कि चलो कुछ डेटा टाइप्स होते हैं एंड दिस इज द वे यू राइट अ प्रोग्राम, एंड व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम आप ऐसे लिखोगे. सो वी डोंट केयर कि हमें बस पता होता है कि हाँ प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, दिस इज वेयर द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, इंट मेन से स्टार्ट होगा. एंड देन इट इज बीन आस्क्ड कि चलो एक काम करो, यहाँ पे जाकर के लाइक प्रिंटफ आप यहाँ पे लिख दो. दिस इज व्हाट इट इज बीन assumption कि हाँ ऐसा कुछ तो काम होता है. अब ऐसा ही क्यों होता है, दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड लाइक व्हेन यू गो ऑन डे 2, डे 3, और धीरे धीरे जैसे जैसे सी का डेज आप सीखना चालू करते हो, यू गेट ऑल द आइडिया कि ऐसे क्यों किया जाता है. यहाँ पे अगर आप कुछ लिखते हो तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, या आप डे 2 और डे 3 पे सीखते हो, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग विद द फंक्शंस, तब जाकर के सीखते हो.
This is how generally the languages are being learned. Similarly, when you are going to enter the Java, if you haven't learned, we could say C++. I'm not talking about C, but I'm saying कि अगर आपने इससे पहले OOP नहीं सीखा है, you don't know what is a class, you don't know what is an object, you don't know what is the static, आपको ये सारी चीजें नहीं पता है, then from day 1 till we could say around day 5 तक, यानी कि पहले 5 दिन there are lot of things that you have to assume कि हाँ इस लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से काम होता है. To be true, क्योंकि that is the fact. First thing is like you have to look everything as an abstraction. सारी चीजें जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पहले समझनी है. All of you, all of you. It is for all of you. So suppose I am writing a class something like this. I am writing a class something like this. Let's say Java में. अब सवाल आ सकता है, those who have learned the C++ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट those who haven't learned the C++ उनको सबसे पहले प्रॉब्लम आएगा, सर ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा, so why the class program has been written, इससे क्या होगा, what actually the class is, what it is doing. So for those you have to wait, यानी कि till we start with the concepts of class, जब तक हम लोग क्लास नाम के कंसेप्ट तक नहीं जाते, till then you have to understand क्या कुछ कोड इस तरीके से लिखना पड़ेगा. Maybe inside that, maybe I'm going to use something called as the static keyword. Sir, ये क्या लिखा, क्यों लिखा? So if you don't know the concept behind it, अगर आपने C++ पहले नहीं किया, do not worry, do not worry. Everything you have to first of all assume कि हाँ Java में अगर कोडिंग करना है, if I want to write some code into the Java, this is the thing that I have to accept. इसको मुझे accept करना है. This is the first thing. So like this, whenever we are going to talk about the concepts, तो इन concepts को जो मैं बता रहा हूँ कि like for example, these are the technical examples. तो technical examples, those can relate जिनका already let's say C and C++ हो चुका है. If you're not able to relate it, I would say rather you just focus on what exactly the abstraction has to say. यानी कि abstraction में होता क्या है कि like getting the things or getting to understand only the required things. टेक्निकल एग्जांपल्स व्हेन वी आर गोइंग टू लुक एट एन एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जब हम लोग एक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग दोस पर्टिकुलर एंटायर थिंग्स, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपको ये क्लियर हो जाएगा. बस. सेकंड, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इनटू दिस पर्टिकुलर बैच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यानी कि जिनका C वगैरह नहीं हुआ है. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप थोड़ा सा एक आफ्टर दिस, यानी कि जैसे ये पूरा हमारा सेशन हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू यूटिलाइज, ये हमारा लेक्चर का टाइम है लास्ट, यानी कि जब हमारा ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, यू डू डेफिनेटली टेक द काउंसलिंग, बिकॉज आई वन डोंट नो यू पर्सनली, काफी सारे स्टूडेंट्स को. तो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगा, वेन एवर यू हैव द प्रॉब्लम, यू नीड अ प्रॉपर काउंसलिंग कि सर जावा विल बी बेटर फॉर मी, क्योंकि हमारे मल्टीपल मॉडलर बैचेस है. इवन वी हैव द C++ रनिंग मॉडलर बैच फ्रॉम टुडे, तो C++ भी चल रहा है, जावा भी चल रहा है. So if you are confused कि sir which one I should go for, which will be the better thing for me, तो ये भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग आप जरूर करवा के लो. All of you, whenever you are going to have such problems, I will stay into the meeting after this session. So around we could say after 1 I'm going to be there into the meeting. Make sure whatever are your questions, whatever are your problems, कि सर ये बैच में कंप्लीट कर सकता हूँ नहीं कर सकता, इंडिविजुअली 1-to-1 we can have the interaction on it. I have already discussed कि करने के लिए कर सकते हो, there's no problem, Java can be learned, Java is simple, but definitely when you have the problem, आप आज का सेशन पूरा अटेंड करो पहले, look at the contents, look at the things that you are going to see, based on that you can conclude, आप एक conclusion पे आ जाओ, and based on that you can ask me the questions कि for you whether it was difficult, whether it was easy for you. तो आप थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ पे ले लो, that's why these demo sessions are been kept, ये डेमो सेशंस उसी के लिए है. सो आप देख चेक करो, इफ यू फाइंड इट आउट कि सर ये काफी डिफिकल्ट जा रहा है मुझे, इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, वी कैन हैव 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस ऑन टू इट. बट अगर आपको लगा एट द एंड ऑफ द डे कि सर ठीक है, आई हैव गॉट द एंटायर इन्फॉर्मेशन, मैं कुछ एजम्पशन करके भी यहाँ पे जा सकता हूँ, दिस इज गुड फॉर मी, देन डिसीजन इज विथ यू. ठीक है, बट चलो अच्छा हुआ संदीप ने ये क्वेश्चन पूछा. दिस इज फॉर मेनी ऑफ यू, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. जस्ट लुक एट द एंटायर डे सेशन फर्स्ट. फाइन, वेरी गुड. For those who don't have the technical knowledge right now about C and C++ or any programming languages, you skip these examples, you skip the technical examples, but understand only this much, what exactly the abstraction is. Whenever you talk about an object oriented programming language, जब आप OOP की बात करोगे, understand for this OOP it is all related with the real life scenarios. ये entire OOP आपके real life scenarios के around घूमता है actual में. So these are the examples, the real life examples that we have, और उन्हीं को टेक्निकली कहीं ना कहीं क्रिएट किया जा चुका है. सो दिस हैव बीन क्रिएटेड टेक्निकली इनटू दिस लैंग्वेजेस. सो जैसे एब्स्ट्रैक्शन में ये क्रिएट करने के लिए
we said this, calling a function or creating the object. Other than that, if you talk about abstraction in the real life, ये हमारे हर जगह पे है. So I don't know how the cylinder has been filled, लेकिन मुझे सिलेंडर को यूज करना आता है. I don't know how the ceiling fan is created, but मुझे उसको ऑन करके यूज करना आता है. So everywhere that you are able to see is abstraction. हर एक जगह पे आप जो देख रहे हो, you are going to see an abstraction. कि जहां पे आपको उसके internals नहीं पता है, but you know how to use it. That's what we call as an abstraction. Fine. Now let us go to the second major pillar of it, where I said that the abstraction, when you talk about abstraction, that means hiding something from the user. You talk about that going to show or getting the only essential things from it, understanding only the required things from it. When you talk about this abstraction, this is not possible unless and until you perform encapsulation. Unless and until you perform encapsulation. Once again, एब्स्ट्रैक्शन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप यहाँ पे इनकैप्सुलेशन नहीं करते, unless until you do the encapsulation. For example, अगर आपके उस लैपटॉप को क्रिएट ही नहीं किया गया है, if someone haven't put down their brains to assemble all those things inside one plastic body, अगर उन्होंने किया ही नहीं, अरे how it is an abstraction for you? अगर किसी ने मोबाइल को मैन्युफैक्चर किया ही नहीं, then how it is an abstraction for you? यानी कि someone has to configure it, someone has to build it. Understand? Someone has to build it. That means someone has to hide it. किसी को तो वहां पे जाकर के हाइड करना पड़ेगा. Someone has to put all the things together and wrap it inside one single entity. So ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इट, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इट, प्रोसेस ऑफ binding the things together, this is what we call as an encapsulation. What is encapsulation? What is encapsulation? Binding the things together. Binding the things together. In the technical terms, we call it as binding of data and code together. In the technical terms, we call it as the binding of data and code together. This is what we call it as an encapsulation. Understand it. Without encapsulation, अगर encapsulation किया ही नहीं गया है, if encapsulation has never done, abstraction is not possible. इसके बिना abstraction possible नहीं है. Technical examples से भी समझते हैं. Understand it with the technical examples. Now imagine that this is the printf function that you have used. What if this printf function was not defined? Imagine it, आप एक printf function को यहाँ पे कॉल कर रहे थे, you are calling a function. तो जो आप function को कॉल कर रहे थे, ये function बना ही नहीं है. How you are going to call it then? If someone, that means specifically we could talk about the Dennis Ritchie. So if he haven't created these particular functions, if he haven't created this function, यानी कि उसने वो पूरी लाइब्रेरी बनाई नहीं है, he said कि okay language तो है, but there are no predefined libraries, there are no any predefined functions, कुछ है ही नहीं, क्या करोगे? What you will do? Is there any abstraction for you? No. What you have to do is you have to write the entire definition of these functions by your own. ये पूरा का पूरा फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा. यानी कि अगर मोबाइल फोन नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं होती, तो आपको कहीं ना कहीं वो दिमाग लगा करके यू हैव टू पुट द थिंग्स टुगेदर सो दैट यू कैन यूज समथिंग फॉर योर रिक्वायरमेंट. आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो सारी चीजें बनानी पड़ती. Now what is happening? The companies are manufacturing it for you. आपके रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपनीज मैन्युफैक्चर करी, वो बना के आपको दे रही है. You are just using it. But the moment the companies start producing it, the moment where these things are not created, the humans has to create all those things as per the requirement by themselves. यानी कि मुझे अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगा, मुझे खुद को ही बनाना पड़ेगा. I'm not depending on someone. मुझे खुद को वो we could say I have to search it, I have to identify it, I have to learn those things, and I have to create it for me. So that means without this encapsulation, understand it, without this encapsulation, अगर किसी ने वो सारा चीज बाइंड करके नहीं दिया, so without this I cannot have an abstraction. यानी कि मैं इसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा. When you talk about abstraction, it is all about using the entire things. So मैं इसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा. Example के लिए, as I said, if the function is not defined, how you are going to use it? So what does the encapsulation means? Encapsulation means defining the functions. Defining the functions.
यानी कि आप कोई भी फंक्शंस को अगर डिफाइन करते हो, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द फंक्शंस, उसके अंदर का कोड और डेटा यूज करके अगर आप कुछ वहां पे स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, सो दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट बाइंडिंग of the code and data together. This entire thing, when you define a function, is nothing but binding the user given data plus the code that you are going to write, the statements that you are going to write. इसको bind करना ही जनरली कहा जाता है encapsulation. Not only that, not only that, whenever you talk about, we could say creating the object. अगर आप यहाँ पे object create कर रहे हो, object किसका create करोगे? Yes, object किसका create करोगे? You are going to create the object either of a class or either of a structure. That means defining the structure or defining the classes. Defining the classes or the structures this is nothing but an example of encapsulation. So whether you are defining a function, whether you are defining the class or a structure, यानी कि आप कर रहे हो encapsulation. If a person, if a user is just calling a function, is just creating the object of the predefined classes, already classes बने हुए, बस उसका object बना रहा है, already let's say functions defined है, बस उसको call कर रहा है. If some user is just calling a function or creating the objects, that means he is performing abstraction, यानी कि वो abstraction कर रहा है. If a particular user is defining the function, वो खुद function define कर रहा है, वो खुद कुछ classes define कर रहा है, that means the person is doing the encapsulation, यानी कि वो encapsulation कर रहा है. The company, now look at it into the real life scenarios. Consider a mobile phone. अब मोबाइल फोन के दो यूजर्स हैं, और दो यूजर्स नहीं बोल सकते. फॉर दैट पर्टिकुलर मोबाइल फोन वी कैन सी दिस टू एंटिटीज. वन वी कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम द कंपनी साइड, यानी कि जो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, एंड वी कैन सी ऑन द अदर साइड देयर इज अ यूजर हु इज गोइंग टू यूज दैट डिवाइस. सो वी हैव अ मोबाइल फोन लाइक दिस. इन बिटवीन आई कुड से इट इन दिस वे. सो वी हैव अ सिंपल मोबाइल फोन, ये एक मोबाइल फोन है, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द कंपनी पीपल. कंपनी की जगह पे आई कुड से मैन्युफैक्चरर. So this is a manufacturer and this is a consumer. This is a consumer. So tell me, for manufacturer what it is and for consumer what it is. किसके लिए abstraction है और किसके लिए encapsulation है? Yes. For a manufacturer, what do you think? What it is? For a manufacturer, what it is? For a manufacturer, what the manufacturer is doing? Is it abstraction or is it encapsulation? Real life scenarios. Very good. It is encapsulation. Why encapsulation? Because he have to think about उसको वो सभी चीजों को bind करना है. वो बैटरी हो, वो कैमरा हो, we could say वो storages हो, we could say सारे sensors हो. He has to bind all those things together inside this mobile device. उसको इस mobile device के अंदर उसको bind करना है. Yeah, but for a consumer, for a consumer, what it is? Yes, the consumer doesn't care about it, how it is binded. For him, the only thing is क्या उसके अंदर वो 100 मेगापिक्सल का कैमरा है, 6000 मिलियन की बैटरी है, एंड सो अगर है आई एम इंटरेस्टेड. वो बैटरी ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, राइट पे लगाओ, लेफ्ट पे लगाओ, आई डोंट केयर. वो कैमरा का होल लेट से लेफ्ट हैंड साइड पे हो, सेंटर पे हो, राइट पे हो, आई डोंट केयर, बट कैमरा होना चाहिए. द एप्पल, जनरली यू टेक एन एग्जांपल ऑफ आईफोन. आईफोन के अंदर कैमरा लेफ्ट पे हो, राइट पे हो, व्हाट डज इट अफेक्ट? क्या फर्क पड़ता है? एनी हाउ द पीपल आर इंटरेस्टेड इनटू द लोगो. यस और नो? दैट्स अ फन फैक्ट. So this is nothing but the abstraction. It is nothing but the abstraction. No one cares where the particular camera has been attached onto that particular iPhone. वो left पे, right पे, center पे, कहीं पे भी लगा. People are still going to buy. Why? Because people are just interested into the abstraction. And they are just interested into the abstraction. That's it. Abstraction. Let me know. Is the abstraction and encapsulation clear to you? ये यहाँ तक clear है. Abstraction and encapsulation. Very good. The next pillar that we have is the modularity. The next major pillar. We are talking about all the major pillars. हम लोग इन सभी major pillars की बात करें. We talked about abstraction, we talked about encapsulation. Now we are talking about the modularity. So when you are going to talk about modularity, it is so simple. It talks about dividing the task, dividing the task into smaller tasks. Dividing a task into smaller tasks. That is what we call as a modularity. Example से समझते हैं. My task is to create
माई टास्क इज टू क्रिएट अ मोबाइल डिवाइस, यानी कि मुझे लेट्स से एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है एंड आई वांट टू हैव माय ओन ब्रांड ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, जैसे एग्जिस्टिंग है सैमसंग है, वी कुड से एप्पल है, शाओमी है, वी कुड से वन प्लस है. सो सिमिलरली आई वांट टू स्टार्ट माय ओन ब्रांड. सो अगर मुझे लेट्स से मेरा वो टास्क है टू क्रिएट अ मोबाइल डिवाइस, व्हाट डू यू थिंक? शुड आई स्टार्ट डिजाइनिंग द प्रोसेसर्स? शुड आई स्टार्ट डिजाइनिंग दोज बैटरीज? शुड आई स्टार्ट डिजाइनिंग दोज कैमराज? और शुड आई जस्ट आउटसोर्स इट? व्हाट इज द बेस्ट इफेक्टिव वे? मेरा एक टास्क है कि मुझे लेट से मोबाइल फोन क्रिएट करके मार्केट में बेचना है. माय टास्क इज टू जस्ट क्रिएट अ मोबाइल फोन एंड सेल इट इनटू द मार्केट. सो क्या इसको करने के लिए शुड आई बी क्रिएटिंग द डिजाइन? शुड आई बी क्रिएटिंग माय ओन प्रोसेसर्स कि मैं उसको आउटसोर्स करूं? कैन आई गो टुवर्ड्स द Qualcomm and say give me the Snapdragon processors? Can I go towards the MediaTek and say give me those processors? जो ऑलरेडी प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कैन आई जस्ट टेल देम hey you people, why don't you give me the processors? I can go to China, I can say hey China wale, if you have those cameras, if you have the manufacturing unit for those cameras, why don't you manufacture the cameras for my device? आप मुझे कैमरास भी दे दो. मे बी आई कैन गो टुवर्ड्स द सैमसंग एंड आई कैन से कि तुम बैटरीज ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, व्हाई डोंट यू गिव मी दोस बैटरीज एंड द डिस्प्लेस? तो तुम एक काम करो, तुम मुझे डिस्प्लेस भी दे दो, बैटरीज भी दे दो. So I'm going to go towards all these different small companies, not a small, but the different giant companies who are the bigger manufacturers. I will just get those components. I will bring it in India. I will just assemble it and I will sell you the mobile device. Hey, yes or no? Hey guys, yes or no? Hey, are you getting the things first? What we are trying to do? Are you there? Are you yes or no? Huh. So what we are talking about is like whenever you are trying to create something, whenever you are trying to have a bigger task with you, जब जब आपके पास एक बहुत बड़ा टास्क होता है, you do not start the task by your own. आप वो खुद ब खुद नहीं करते हो. What you do is you divide that task into the smaller task. यानी कि आप वो हर एक बहुत बड़े बड़े टास्क को आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हो. इसे ही कहा जाता है मॉडलिटी. दिस इज कॉल्ड एज द मॉडलिटी. इसे ही कहा जाता है मॉडलिटी. Now look at that into the programming languages. यानी कि अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करोगे, so for the programming also it is the same thing. प्रोग्रामिंग के लिए भी सेम ही चीज है. So for a particular program, you don't write the entire program in just one single file. आप एक ही फाइल में सारा चीज नहीं लिखोगे. If you talk about the example, let me say it in this way. You do not write the entire program in one single file. Okay, what you do is आप उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड करते हो. What you do, you divide the program into multiple files. आप उसको मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड करते हो. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द मॉडुलरिटी. यानी कि किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी पर्टिकुलर वॉट एवर द प्रोग्राम और द वी कुड से the development that you are going to do, so the development does not happen only in one single file. ऐसा नहीं होता है. There is not only one single developer, there's a team of developers. वहां पे एक बहुत बड़ी टीम होती है. And every particular we could say developer is going to write some code. वो हर एक particular code अलग अलग फाइल्स में लिखा जाएगा and then everything is going to be merged together. So dividing the program into the multiple files is the best technical example of modularity. And not only that, ये वापस से आप C में भी देख चुके हो. If you have understood the program of we could say hello world in C, तो आपने जब start किया writing the integer main, you wrote this entire program into a file called as we could say demo.c. आपने इस प्रोग्राम में लिखा. बट वेन यू आर राइटिंग दिस कोड, व्हाट यू डिड वाज यू इंक्लूडेड समथिंग. आपने यहां पे कुछ तो इंक्लूड किया. एंड व्हेन यू आर इंक्लूडिंग समथिंग, यू सेड हैश इंक्लूड stdio.h. यानी कि इसका मतलब था कि आप इस फाइल को यूज करना चाहते हो. विच फाइल यू वांट टू यूज दिस stdio.h. दैट मींस यू आर सेइंग देयर इज सम पार्ट ऑफ कोड, यानी कि ये जो printf फंक्शन है, scanf फंक्शंस है, ऑल दिस फंक्शंस or the predefined functions are already kept inside this file. I want to import it inside my demo0.c. So this is the file where I want to use it. यानी कि ये ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है एक फाइल में, आप एक दूसरी फाइल लिख रहे हो where you are starting with your program. This is what we called as the modularity. So dividing the program into the multiple files is the first example of modularity. Not only that, even dividing, or we could say defining multiple classes and multiple functions
and multiple functions are also example of modularity. Again, example के लिए, if I want to write the code for creating a calculator, मुझे कैलकुलेटर का कोड लिखना है कि जहां पे यूजर लेट्स से दो नंबर्स को एंटर करेगा एंड ही इज गोइंग टू हैव द ऑप्शन 1 2 3 4. 1 प्रेस करेगा तो एडिशन होगा, 2 प्रेस करेगा तो सब्सट्रैक्शन होगा, 3 प्रेस करेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा. So whenever I'm going to write such type of code, such type of calculation वाला code, I don't write that particular code in just one single function. ऐसा नहीं होता है. What I do is I create multiple functions for it. यानी कि मैं अलग अलग functions बनाऊंगा. I'm going to create a function called as add. I will create a function called as subtract. I will create a function called as the multiply. I will create a function called as a division. ऐसे अलग अलग functions को मैं create करूंगा and as per the requirement, what the user has entered. क्या यूजर ने 1 एंटर किया है, क्या यूजर ने 2 एंटर किया है, यूजर has entered 3, यूजर has entered 4. Depending on that, I'm going to call the required function. As per this, ये functions को call किया जाएगा. This is what we call it as the modularity. Let me know, is the modularity clear to you? Is the modularity clear to you guys? Yes, very good. Now say how simple it is. अगर आप नोटिस करोगे किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और मॉड्युलरिटी इंप्लीमेंट करना, डोंट यू थिंक इट इज वे मोर सिंपल? एवरी लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं, इंप्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और मॉड्युलरिटी इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये सभी लैंग्वेजेस फॉलो करते हैं, वेदर इट्स एन ओपी वेदर इट्स नॉट एन ओपी. अगर आप सी की भी बात करोगे, इफ यू सी एन एग्जांपल, right now I have talked about the C language, और C language को consideration में लेते हुए I said कि whether it's an abstraction, encapsulation और modularity, it is already present. वो already यहाँ पे present है. Dividing a file into multiple files. Example के लिए, as I said, this is the C code. ये C code आपके सामने है. Got it? This is the program. So if I want to start accepting two numbers from user, मुझे user से दो numbers उठाने हैं and I want to do the addition of those two numbers and I want to display the output. बताओ क्या क्या यूज होगा? आई हैव टू राइट द मेन के अंदर 3 बार, और वी कुड से आई वांट टू कॉल दिस 3 फंक्शंस. फर्स्ट वन इज द printf फंक्शन, सेकंड वन इज द scanf फंक्शन, एंड थर्ड वन इज वंस अगेन द printf फंक्शन. फर्स्ट printf क्या करेगा? सो दिस printf इज गोइंग टू आस्क टू एंटर 2 नंबर्स. ये 2 नंबर्स को एंटर करने के लिए पूछेगा. scanf क्या करेगा? So it is going to accept those 2 numbers. और printf क्या करेगा? It is going to print the addition. वो यहाँ पे addition को print करेगा. Yes or no? Yes. So these printf, scanf, ये printf, ये कहाँ से आ रहा है? Where it is coming from? Don't you think it is coming from the stdio.h? Are you understanding it? यानी कि इस फाइल को मैं आपके demo.c के अंदर what I'm doing, I'm using it. तो demo.c में कुछ कोड है, stdio.h में कुछ कोड है, यानी कि ये पूरा प्रोग्राम रन होने के लिए मुझे 2 फाइल्स की जरूरत है, stdio.h एंड demo.c. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द मल्टीपल फाइल्स दैट आर यूजिंग. नॉट ओनली दैट, अब ये तो चलो हो गया सिंपल सा एग्जांपल, बट थिंक अबाउट इट ऑन अ बिगर स्केल कि लेट्स से मुझे एम्प्लॉय के साथ कुछ काम करना है, स्टूडेंट्स के साथ कुछ काम करना है, मे बी प्रोडक्ट्स के साथ कुछ काम करना है. आई कैन नॉट राइट द एंटायर कोड इनटू वन सिंगल फाइल. एम्प्लॉय के रिलेटेड आई विल हैव एन employee.h. Let's say product related, I'm going to have the product.h. Attendance related, I'm going to have the attendance.h, and everything is going to be merged together. This is what we call as the modularity. Example of modularity. Fine. So any language out there, doesn't matter whether it's a C, C++, Java, Python, आप कोई भी languages उठाओ, all these languages do support abstraction, encapsulation, modularity. It doesn't matter whether it's an OP or whether it's not an OP. It doesn't matter. But where the game changes, ये game change कहाँ पे होता है? So it changes when you enter this 4th major pillar called as the hierarchy. When you enter this 4th major pillar called as the hierarchy. Now, what is this hierarchy and what exactly it has to be when you talk about the program? यानी कि प्रोग्राम के अंदर हायरार्की को इंप्लीमेंट करना इन द सेंस क्या है, and how it differentiates an object oriented programming language from the other languages, यानी कि कैसे इसकी वजह से डिफरेंस हुआ. So now let us talk about it. Let us talk about the hierarchy first. Whenever you talk about hierarchy, जब आप हायरार्की की बात करोगे, always remember it talks about reusability. What it talks about? It talks about reusability.
हायरार्की टॉक्स अबाउट रिजल्ट, यानी कि एग्जिस्टिंग चीजों को कैसे रीयूज किया जा सकता है. सो इफ आई हैव अ पर्टिकुलर, वी कुड से एग्जांपल के लिए क्लास मेरे पास है, सो हाउ कैन आई रीयूज दैट पर्टिकुलर क्लास. दिस इज व्हाट इज गिवन बाय दिस हायरार्की. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट रीयूजेबिलिटी, एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि लाइक सपोज देयर इज a mobile phone. Once again, let's take off the same example. There is a mobile phone that I want to create. तो मोबाइल फोन को क्रिएट करते वक्त डोंट यू थिंक द मेन पर्पस ऑफ द मोबाइल फोन was to give a call to an another person and to receive the incoming calls. सबसे पहला पर्पस फोन का क्या था? हैविंग अ पर्टिकुलर फोन इन टू द हैंड. पर्पस वही था, पर्पस था कि कैसे उस फोन को यूज किया जा सकता है टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन विच इज फार टू अवे फ्रॉम मी. यानी कि मैं उसको कॉल कर सकूंगा, मे बी अगर उसको मुझे कॉल करना है, ही कैन कॉल इट टू मी एंड वी कैन हैव द कम्युनिकेशन. दैट वाज द सोल पर्पस ऑफ इट. सो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई गई थी, whatever the technology is created for this, to create that particular mobile device, it don't you think the technology has to be reused as it is. सपोज ये एक मोबाइल फोन को यूज करने के लिए, मोबाइल फोन इन द सेंस कोई भी पर्टिकुलर फोन विच कम्युनिकेट्स टू एन अदर फोन वायरलेसली, वी आर टॉकिंग अबाउट वायरलेसली. तो इसके लिए जो जरूरत है, जैसे एक सिम की जरूरत है, जैसे ये एक नेटवर्क को कनेक्ट होना चाहिए, मे बी इसके अंदर वो एंटीना होना चाहिए, उसके अंदर एक एंटीना होना चाहिए. ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी फोन का, इट डोंट यू थिंक इट इज कॉमन इन ऑल द फोन्स राइट नाउ. हर एक फोन में ये चीजें क्या है, ये सभी चीजें कॉमन है ना. बिकॉज दिस थिंग्स आर कॉमन इन ऑल द फोन्स, डोंट यू थिंक आगे आने वाले फोन्स इसी टेक्नोलॉजी को एज इट इज रीयूज करेंगे. इवन वी कुड से द फर्स्ट फोन दैट वाज क्रिएटेड, उस फोन से लेके अब तक के फोन्स में, इट डोंट यू थिंक दिस थिंग्स आर कॉमन. सिम, नेटवर्क एंड एंटीना. वो सिम होना चाहिए, उसके पास वो नेटवर्क आना चाहिए, एंड द थर्ड थिंग, उसके पास वो एंटीना होना चाहिए फॉर द रिसीविंग दोस पर्टिकुलर सिग्नल्स. अगर ये नहीं होगा, इज द मोबाइल फोन गोइंग टू वर्क? नो. अलॉन्ग विद दिस, अब इसके साथ चेक करो, इसके साथ चेक करो, देर आर दिस टू टाइप्स ऑफ फोन्स दैट आर गेटिंग क्रिएटेड. एक हो सकता है आपका फीचर फोन, one can be a feature phone like this, and another one can be, we could say, a smartphone. एक आपके पास फीचर फोन होगा, एक आपके पास स्मार्टफोन होगा. फीचर फोन में क्या होगा, ये बेसिक चीजें होंगी और कुछ एक्स्ट्रा चीजें, यानी कि कैलकुलेटर का छोटा सा एप्लीकेशन शायद मिल जाएगा, दो तीन गाने सुनने के लिए, वी कुड से यू विल गेट अ म्यूजिक प्लेयर ओनली. इट इज गोइंग टू हैव अ सिंपल सिंपल फीचर्स. बट इफ यू टॉक अबाउट अ स्मार्टफोन, उसमें ये सभी चीजें आएंगी प्लस. प्लस इसके साथ साथ द स्मार्टफोन इज गोइंग टू हैव इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम. नोटिस इट, फीचर फोन के अंदर भी ये सारी चीजें हैं, स्मार्टफोन के अंदर भी ये सारी चीजें हैं. ए डोंट यू थिंक द सेम थिंग, द सेम टेक्नोलॉजी दैट वाज क्रिएटेड is been reused by both of these phones now? Whether you are creating a feature phone, whether you are creating a smartphone, doesn't matter. Don't you think these things are going to be repeated in the sense these things are going to be reused? Are yes or no? Are these things going to be reused? Yes. So this is what we call it as the hierarchy. What does the hierarchy means? Hierarchy means reusing. Hierarchy means reusing the existing structures, reusing the existing classes. जो भी existing आपके प्रोग्राम के अंदर है, you should be able to reuse it. उसे ही कहा जाता है hierarchy. It is called as the hierarchy. Let me know, is first the hierarchy clear to you? Guys, is first the hierarchy clear to you? Hierarchy means reusability. कैसे reuse करना है? Fine. अब थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ओपी. आप चाहे तो यहाँ पे नोटिस करके मार्क करके रखो, इफ यू आर राइटिंग और इफ यू आर हैविंग सम नोट्स ऑन योर ओन, डू मार्क इट. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ओपी. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि एंटायर ओपी रिवॉल्व्स अराउंड हायरार्की. पूरा ओपी आपका इस हायरार्की के अराउंड रिवॉल्व करता है. एंड इनहेरिटेंस और स्पेसिफिकली हायरार्की in Java is the most important thing. I'm saying most important thing क्योंकि वो स्टार्ट भी वहीं से होता है. Even it starts from it. So hierarchy is very important topic. इस hierarchy टॉपिक को देखने के लिए there are lot of prerequisites, यानी कि बहुत सारी चीजें हमें करनी है. Maybe this topic is going to be our topic on 4th और 5th day, यानी कि चौथे और पांचवें दिन का जो जावा हम लोग सीखने वाले हैं. This is where we are going to talk about the hierarchy. लेकिन पहले 3 दिन इट इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट द बेसिक्स, हाउ टू वर्क विद जावा, हाउ टू स्टार्ट द प्रोग्राम एंड सो. बट यस, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ओपी. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
Now, when you talk about hierarchy, when you talk about reusability, how to achieve the reusability, उसको करे कैसे? Into a particular, we could say programming languages, how to achieve that reusability. So to achieve that reusability, there are these two concepts given by the hierarchy. यहाँ पे दो concepts है. पहला concept है, it is called as association. The first concept is called as the association, and the second concept is called as the inheritance. It is called as the inheritance. There are these two concepts given by it. So whenever you talk about reusability, जब जब आप reusability की बात करोगे, the reusability can be implemented. So maybe I can say it in this way. It can be implemented. It can be implemented by using either association or inheritance. By using either association or inheritance. Now, what is this association and what is this inheritance? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. एंड अगेन दिस इज अ टेक्निकल एग्जाम्पल. इफ यू नो दिस, यानी कि अगर आपको ये पता है कि हाँ सर, वी नो व्हाट इज अ क्लास, वी नो व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, अगर आपको पता है, दिस एग्जाम्पल इज फॉर यू. अगर नहीं पता है, कीप दिस एग्जाम्पल राइट ओवर हियर. ये एग्जाम्पल यहीं पे रखो, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग दैट आज का दिन हो जाएगा तो कल कभी यूज नहीं होगा. इट इज नॉट समथिंग लाइक दिस. द नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इवन आफ्टर दिस एंटायर कोर जावा बैच हैज बीन फिनिश्ड. यानी अगर आप इंटरव्यूज में वगैरह जाओगे तब रिवीजन के लिए आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा. सो द एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कीप इट राइट ओवर हियर. अभी समझ आएगा तो ठीक है, नहीं समझ आएगा बाद में when you are going to learn the entire hierarchy, उसके बाद अगर आप इसको रिवाइज करने के लिए ओपन करोगे, you will be getting the correct we could say answer, और रिवीजन के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा. सो लुक एट दिस एग्जांपल. बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. जनरली यू टॉक अबाउट द डेट्स. एक डेट नाम का क्लास, एक डेट नाम का स्ट्रक्चर, which is the most popular class or the structure generally into the programming languages. Why? Because ये डेट कुछ इस तरीके से क्रिएट किया जाता है which generally accept these three things. इसके अंदर होता है day, we could say day, we could say month, and finally it has got the year. कोई भी पर्टिकुलर डे, मंथ और ईयर वाला एक क्लास, जनरली एक डेट क्लास, every programming language is going to have it. Whether you talk about C, whether you talk about C++, whether you talk about Java, doesn't matter. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ये क्लास जरूर मिलेगी. Now, whatever the implementation about the date is, can I say it has been already given by these particular we could say languages. अब आप सोचो आप डेट के साथ क्या क्या करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एंटर द डे, मंथ एंड ईयर. नॉट ओनली दैट, यू हैव टू चेक फॉर इट्स वैलिडेशन. आपको वैलिडेशन भी चेक करना पड़ता है. Not only that, maybe you are going to add some of the days, maybe you are going to add some of the month into it, maybe you want to work with individual day, month and year. यानी कि बहुत सारी चीजें डेट के साथ जो आप कर सकते हो. Entire thing is going to be implemented for you. Entire thing is going to be implemented for you. यानी कि इसका implementation आपको बना के दे दिया जा चुका है. यानी कि this programming language has already given it to you. Now for your class, let's say आप एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो. यू आर क्रिएटिंग अ क्लास कॉल्ड एज अ पर्सन. आप उसको क्लास कंसिडर करो और यू कंसिडर इट एज अ वी कुड से अ सिंपल एज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. आप स्ट्रक्चर कंसिडर करो या फिर क्लास कंसिडर करो, डजंट मैटर. फॉर अ पर्सन क्लास, आई वांट टू हैव द इनपुट ऑफ अ नेम. मुझे यूजर से नेम को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है. अलॉन्ग विद दैट आई वांट टू एक्सेप्ट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन. अंडरस्टैंड इट. मुझे यहाँ पे पर्सन के लिए नेम भी चाहिए एंड पर्सन के लिए व्हाट आई वांट इज द डेट ऑफ बर्थ. सो हियर द नेम, एज वी नो, वी कैन गो फॉर अ टाइप कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग. आप लोग स्ट्रिंग टाइप के पास जा सकते हो. एंड फॉर अ डेट ऑफ बर्थ, इट डू आई नीड टू create my own class called as a my date, or should I say it in this way, integer day, integer month, integer year, like this? Should I declare this particular variables once again like this, or should I reuse the existing date class? मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए. Either I should be declaring these three variables like this, day, month and year, or we could say, should I create my own class called as the my date, ऐसे मैं खुद का क्लास बनाऊं, or should I reuse the same existing class? अगर ये ऑलरेडी क्लास प्रेजेंट है, if this class is already present into the library, अगर ये C, C++ और जावा ने खुद ने ये क्लास दे के रखा हुआ है, it don't you think instead of spending the time
इन डिक्लेयरिंग दिस थ्री वेरिएबल्स, ये डे मंथ और ईयर को डिक्लेयर करो, उनका वापस से वी कुड से बिहेवियर रिप्रेजेंट करो, वैलिडेशंस को चेक करो, और वी कुड से क्रिएट माय ओन क्लास. डोंट यू थिंक द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग is to reuse the entire technology or reuse the entire, we could say, the class that has been created? Don't you think so? Which is more better? जैसे मैंने एग्जांपल में दिया, आर यू गोइंग टू वंस अगेन री इन्वेंट द सेम थिंग? वो सिम को कैसे लेट से वहां पे लगाना है, अच्छा नेटवर्क कैसे आएगा, लेट से एंटीना को कहां पे लगाना, आर यू गोइंग टू वंस अगेन री इन्वेंट इट? नो, आप री इन्वेंट नहीं करोगे. आप क्या करोगे? द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इनटू द मार्केट, यू आर गोइंग टू यूज इट एज इट इज. मे बी आपको उसके हिसाब से आपके रिस्पेक्टिव उसको कस्टमाइज करोगे. यू आर जस्ट गोइंग टू कस्टमाइज इट, बट यू आर गोइंग टू यूज इट एज इट इज. इवन फॉर द स्मार्टफोन मार्केट भी आप चेक करो, कोई भी अगर आप स्मार्टफोन आप देखोगे, वेदर यू टॉक अबाउट द वन प्लस, वेदर यू टॉक अबाउट वी कुड से द ओप्पो, वीवो, वी कुड से द शाओमी, जितने भी स्मार्टफोन्स आपके बाजार में हैं, यू विल फाइंड इट आउट, every smartphone is using the same operating system. It is nothing but the Android operating system. But उन्होंने किया क्या? For this Android operating system, उन्होंने उसको reuse किया, and on top of it, they just customized it. उन्होंने क्या किया? उसको बस क्या किया? Customize किया. उसको बस क्या किया? Customize किया. यानी कि if you look at the Xiaomi phones, उनका look and feel UI का थोड़ा सा अलग दिखेगा. If you look at, we could say Oppo and Vivo, उसका UI थोड़ा सा अलग दिखेगा. If you go for the OnePlus, आपको उसका UI कहीं ना कहीं अलग मिलेगा. What they have done? They have done the customizations. What they have done? They have done the customizations. So ये जो customizations किया है किसके ऊपर? Android ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर. So can I say this Android OS जो Google ने देके रखा है, who is giving this? Who is giving this Android operating system? ये Google ने देके रखा है. So whatever the entire operating system is given by the Google, don't you think they are just reusing it as it is? Are they reusing it? Yes. What they are doing is little bit customization. Exact the same thing. Already कुछ classes created रहेंगे. Everything is going to be implemented. Not everything, sorry, but few of the things are going to be implemented. So for your need, आपकी need के हिसाब से you can start reusing it. आपकी need के हिसाब से what you can do is you can start reusing it. This is what we call it as, we could say, hierarchy. इसे कहा जाता है hierarchy. Now look at that. Whenever you talk about a class person, आपका person class इस date को क्या कर रहा है? reuse कर रहा है. What it is doing? It is reusing. ये जो behavior यहाँ पे देख रहे हो, the behavior that you are able to see, that within this class, look at that. एक class के अंदर अगर दूसरे class का object बनता है, look at this. Inside one particular class, if you create an object of another class like this, अगर आप ऐसे करोगे तो इसे कहा जाता है association. This is what we call it as the association. अगर समझ आया तो ठीक है. If you are finding it out कि सर ये टेक्निकली शायद से हमें नहीं पता, we don't know what is association, we don't know what is an object, या हमें पता ही नहीं है डेट ऐसे क्यों लिखा जाता है, leave it. As I said, this is an example, not for right now. जिनको अभी समझ आएगा इट्स गुड, बट दिस इज एन एग्जांपल फॉर द रिविजन्स. यानी कि जब आप ये फाइल जावा खत्म होने के बाद इंटरव्यू से पहले या फिर लेट से किसी एग्जाम से पहले अगर आप ओपन करोगे, एट दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. सो जस्ट अंडरस्टैंड इट. इफ दिस इज द वे इट इज बीन डन, अगर कुछ इस तरीके से किया गया है, किस तरीके से? वेर यू हैव क्रिएटेड वन पर्टिकुलर क्लास, यूर क्लास, एंड विद इन यूर क्लास यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन अनदर क्लास, तो इसे जनरली कहा जाता है एसोसिएशन. एंड दिस एसोसिएशन is supported. This association is supported in C as well as C++ as well as Java. यानी कि ये आपके C लैंग्वेज में भी सपोर्टेड है, where you can create this instead of class as a structure. आप structures बनाओ and you create the object of a structure. So association is supported in C language. Understand it? It's supported. First of all, let me know, is association clear to you? We are talking about hierarchy, we are talking about reusability. हम लोग कुछ यहाँ पे reuse करने की कोशिश करें. We are trying to reuse something. Yes, guys. Have I understood it so far? Very good. Very fancy. Okay. Now let us go for the next one, that is nothing but the inheritance. Now when you talk about inheritance, again we are talking about the reusability. When you talk about inheritance, करना तो ऐसा ही है, यानी कि we have to reuse the class, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है.
करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. Look at this example. I am going to have, we could say, a class, we could say an employee. मेरे पास एक क्लास है employee नाम का. Now inside this employee, once again I require the name, I require the date of birth, I require the salary. मुझे चाहिए उसका सैलरी. नेम, डेट ऑफ बर्थ और सैलरी. कुछ दिख रहा है? आर यू फाइंडिंग सम सिमिलैरिटीज? लुक एट दिस टू क्लासेस. लुक एट दिस टू क्लासेस. नेम वापस से it is going to be of type string. This is going to be of type date type. Date of birth is going to be of date type. Salary, maybe I can say it is going to be of double type. जरा आइडेंटिफाई करो. आर यू फाइंडिंग सम सिमिलैरिटीज? कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज दिख जाएंगे आपको. Look at this part and look at this part. Are you finding some similarities? So can I say already the implementation of a person has been done. Already कुछ person का implementation हो चुका है. यानी कि accepting the name, accepting the date of birth, displaying the name, displaying the date of birth. यानी can I say some implementation is already done? Some implementation is already done. So can I say this employee is also a person? हर एक employee एक person भी होता है. And whatever the details of a person are there, अरे वो तो employee के लिए भी होगा. So can I just reuse this class? Can I just reuse this class? क्या मैं इस class को reuse कर सकता हूँ? Understand it. We are talking about reusability. What we are looking at, we are talking about reusability. When you talk about reusability, हमने कहा कि चलो date class already बना हुआ है. So for a date of birth, it's better you reuse the class. Exactly like this, when I talk about an employee class, employee के पास भी name है, employee के पास भी date of birth है, but उसके साथ उसके पास क्या है? It has got the salary. So here I can see that the name and date of birth from a person is getting repeated. So can I just reuse it? Can I reuse the entire implementation of it? Yes. अगर मैं इस implementation को reuse करता हूं, do I need to provide any another implementation for this? No. मुझे सिर्फ implementation किसके लिए देना पड़ेगा? Salary के लिए. That means I have to implement only the salary part. सिर्फ इसी का कोड मुझे देना पड़ेगा. Rest everything I can reuse it from the person. Again, I am talking about reusability. Now, when you start reusing it, there are two options over here. The first option is like, instead of giving the name and date of birth like this, you can say it in this way, person P. आप ऐसे कह सकते हो. But there is one more way of doing it. मैंने एक way already दिखाया, where you create the required object, यानी कि जिसको आपको reuse करना है, you create the object of it inside this class. ये एक तरीका है. There is another way of doing it. Instead of saying it over here as a person P, what you can do is इसी के आगे, if you are in C++, you will use a colon. If you are in Java, you will say extends a person. You will say it in this way. Again, understand it. Whatever the implementation of this person is, I am reusing that entire implementation by writing this, by saying extends person. That means entire implementation of this person is added inside this employee class. Add करने के दो तरीके. Either you do it in this way by saying association, or you say it as this by saying extends. That means you are performing an inheritance over here. ये extends person in the sense क्या है? This is nothing but the inheritance over here. First of all, इसको syntactically समझते हैं. Understand syntactically the difference between these two. If you create the object of an existing class like this within the another class, we call it as an association. यहाँ पे आप objects नहीं बना रहे हो. You are not creating those objects. What you are doing? आपने बस उसको बोला extend. What you said extend. Extend in the sense you are saying extend the implementation of the employee by using the person. What you are saying, extend the implementation of an employee by using the person. Person का implementation as it is use करो, and you can extend the employee details as well. यानी कि employee का implementation आप extend भी कर सकते हो. इसे कहा जाता है inheritance. This is what we call as a inheritance. Both these ways, association and inheritance, ये दोनों भी ways are nothing but reusability. If both of these are a way of reusing the existing classes. Both of these are the examples of reusing the existing classes. Now, when you talk about association, when you talk about inheritance, to explain it in a more simplest form, to explain it
ये सबसे पहला एक ही चीज है, रीयूजेबिलिटी। अब यहाँ पे नोटिस करो, एग्जिस्टिंग क्लासेस थे, यानी कि हाउ दिस कंसेप्ट इवॉल्व ओवर द टाइम, उसको पहले समझते हैं। इनिशियली देयर वर दिस क्लासेस एंड द क्लासेस हैज टू बी रीयूज्ड। तो रीयूज करने के दो तरीके, वन वाज कॉल्ड एज एसोसिएशन, वन वाज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। बट हाउ डू वी एक्सप्लेन इट कि एग्जैक्ट एसोसिएशन है क्या, एग्जैक्ट इनहेरिटेंस है क्या, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाउ डू वी एक्सप्लेन इट। तो उस एक्सप्लेनेशन के लिए दे क्रिएटेड दिस टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ये एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस एसोसिएशन, हाँ दिख तो रहा है, वी गॉट द इंफॉर्मेशन, आई एम रीयूजिंग इट, एक को ऐसे कर रहा हूं, एक को ऐसे कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कर क्यों रहा हूं, व्हाई आई एम डूइंग इट। सो टू एक्सप्लेन इट, there are these two types of relationships that they created. The first type of relationship was called as the hazard relationship. It was called as the hazard relationship, and for inheritance they created this relationship called as the easer relationship. They call it as the easer relationship. यानी कि यहाँ पे दो रिलेशनशिप्स बने, एंड दे सेड कि जरा इन दोनों भी क्लासेस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप फिट होता है चेक करो, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट you go for association or you go for inheritance. Again, understand it, what the particular developers did. So they said that whenever you are going to reuse those classes, जब आप उनको reuse करोगे, how will you decide whether I should go for association, whether I should go for inheritance, मैं decide कैसे करूं, how do I decide it? So to decide it, first of all, you should look for which type of relationship it is going to form. तो यहां पे नोटिस करते, चलो लिखते हैं यहां पे. So I'm going to say this is the person, this is the person which is going to use the date, which is going to use the date, and this is the employee which is going to use the person. So मेरे पास एक person class है जो कि इस date को use करने वाला है. Similarly we have the employee which is going to use this particular person. So tell me which relationship is going to form the correct grammatical statement over here. कौन सा पर्टिकुलर ग्रामेटिकल स्टेटमेंट करेक्ट होगा इफ आई स्टार्ट यूजिंग द रिलेशनशिप्स. सो फर्स्ट, पर्सन हैज अ डेट और पर्सन इज अ डेट, इसमें से कौन सा सही है ये आप बताओगे. सिमिलरली वी कुड से एम्प्लॉय हैज अ पर्सन एंड वी कुड से एम्प्लॉय इज अ पर्सन. तो यहां पे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो which particular thing makes a sense, यानी कि यहाँ पे कौन सा सेंस बनाता है. So if you observe, can I say person has a date makes the correct sense. What makes the correct sense? Person has a date, but person is a date, यानी कि आप बोल रहे हो कि पर्सन खुद एक डेट है. अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट इन द सेंस ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट साउंड करता है, ग्रामेटिकली दिस इज करेक्ट. सिमिलरली एम्प्लॉय हैज अ पर्सन, एम्प्लॉय के अंदर पर्सन है या फिर एम्प्लॉय खुद एक पर्सन है, यानी कि एम्प्लॉय भी एक पर्सन है, एम्प्लॉय भी एक ह्यूमन बीइंग है. सो हियर यू फाइंड इट आउट दैट एम्प्लॉय हैज अ पर्सन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट साउंड करता है, वेयर अबाउट एम्प्लॉय इज अ पर्सन साउंड्स करेक्ट. आर यू गेटिंग इट? सो whichever particular we could say the relationship sounds correct first of all grammatically, based on this you choose the way how to perform it. You can either go for association or you can go for inheritance. In C language, hazard relationships are possible, यानी कि associations possible है, but in C this inheritance is not possible. ये inheritance वहां पे possible नहीं है, and because of which your C is not an object oriented programming language. वो object oriented programming language ना होने का रीजन है कि वहां पे inheritance exist नहीं करता है. That does not exist this inheritance. If you observe this, अगर आप यहाँ पे notice करोगे, the first definition that I wrote, यहाँ पे पहला definition जरा check करो. What is the definition that I have written? Any particular programming language that implements abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. Which is the part? It is nothing but the inheritance that we are looking at. So this is not supported in C. तो क्योंकि ये supported नहीं है, C is not an object-oriented programming language. लेकिन C में definitely the abstraction and encapsulation is already been supported. ये supported है. It is supported, but the inheritance is not supported. But in C++ and in Java, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, so in C++ and Java, inheritance is supported. Let me know. Is this clear? Or is this part clear? Is this hierarchy clear?
What about base and derived class? This is what the employee जो आप देख रहे हो, this is nothing but derived class. Person is nothing but the base class. Java में आओगे तो employee is called as a subclass. Person is called as the super class. In general terms, in OP, employee is called as the child class. Person is called as the parent class. These are the terms. ये terms हैं. यहाँ पे अगर आप डेट और पर्सन की बात करोगे, जनरली इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन इट इज बीन कंसिडर्ड दैट द पर्सन इज द डिपेंडेंट क्लास एंड डेट इज द डिपेंडेंसी क्लास. तो ये सभी उसके टेक्निकल टर्म्स हैं. What these classes will be called. Fine. Very good. These are all the four pillars, or we could say four major pillars of OP. You notice it when we started with the major pillars. We say in the major pillars we have the abstraction, encapsulation, modularity, and hierarchy. As per the Grady Gooch, he said the major pillars are the one which needs to be compulsory followed by an object-oriented programming languages or any languages that terms to be an OP. So we have seen the abstraction, encapsulation, modularity, and hierarchy. Let me know, are there any questions onto this? इसके ऊपर कोई questions है? Have you got the concepts? Have you understood all the major pillars? Very good. Very nice. Now the next part, we are going to say this is nothing but the minor pillars. These are nothing but the minor pillars. Whenever you talk about minor pillars, जब आप minor pillars की बात करोगे, these pillars are optional to be implemented in the OP languages. These pillars are optional. यानी कि अगर वो exist करता है, that's nice. अगर वो नहीं भी करते, that's okay. But these are the optional pillars to be implemented into the OP languages. Now, which are these pillars? Which are these minor pillars? Let us start with the very first one. Which is the first minor pillar? Which is the first minor pillar? It is typing/polymorphism. It is typing/polymorphism. Do you know what is polymorphism? आपको पता है what is polymorphism? So polymorphism, same function name, many forms, different forms, having many forms. Okay. Any other? Fine. Let me just write the definition for it. What is polymorphism? One entity that takes multiple forms. One entity that takes multiple forms. Simplest example से देता हूँ. Let us take an example of myself itself. So मेरे let's say when I am going to make simple सा human being हूँ, I am a simple person. एक simple सा human being, a simple person. But see the roles that I play. If suppose I am going to be with you guys, यानी कि जब मैं आपके साथ होऊंगा, so what happens? I am going to be as a trainer, यानी कि मैं as a teacher यहाँ पे behavior दूंगा. When I'm going to be, let's say, with my parents, I'm going to behave like a son. तो मैं एक, let's say, एक बच्चे जैसा behave करूंगा. When I'm going to be with my wife, I'm going to be like an husband. If suppose I'm going to be with my daughter, so I'm going to be like a father. यानी कि I am the same person. मैं एक ही person हूँ, but look at the roles that I'm actually taking. Look at the forms that I'm taking. I might be a proper son. I might be a, we could say, husband. I might be a, we could say, a teacher. I might be a particular, we could say, a father. यानी कि I can take the particular role as per the requirement. I can take the particular role as per the requirement. यानी कि I am the same entity. मैं वही entity हूँ, but I can take the multiple forms. मैं अलग-अलग forms को यहाँ पे ले सकता हूँ depending on the requirement. इसे ही कहा जाता है polymorphism. This is itself called as the polymorphism. जैसे अगर आप मोबाइल फोन की भी बात करोगे, nowadays the mobile phones are also showing you the example of polymorphism because now the mobile phones are not restricted only for giving a call and receiving a call. From the mobile phones you can do a lot of things. You can use it as a calculator, you can use it as a radio phone, you can use it as an MP3 player, you can use it as a torch क्योंकि उसके पास है, you can use it as a camera. Not only that, even you can use it as, we could say, one of the important factor like doing the payments, doing the banking services. Can you see a simple device, one entity that is going to perform multiple different tasks?
हैविंग द मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेंस वो एग्जैक्टली बिहेवियर उस तरीके से दे रहा है, जैसे हम लोग बैंकिंग करते थे वैसा बिहेवियर मोबाइल फोन दे रहा है, जैसे हम लोग एक एक्सटर्नली टॉर्च लेके घूमते थे वैसा बिहेवियर वो मोबाइल फोन दे रहा है. Initially we used to have some digital cameras, exact behavior that the mobile phones are giving. So that means the mobile phones are actually giving me the or providing me the behavior like a completely different form. And this is what we call it as the polymorphism. So polymorphism is nothing but one entity that takes multiple different forms. First, is this polymorphism concept क्या है? Is it clear to you? What exactly the polymorphism is? Examples आप यहाँ पे लिख के रखो. These examples are really important. So these are non-technical examples. So the non-technical examples are, we could say, a mobile phone, or you could call it as a person. So person can take different forms depending on where he is, or a mobile phone can be used to perform multiple different operations as per the requirement. If you talk about the example, if you talk about the technical examples, so these are the non-technical examples, these are the technical examples. So how it is being implemented? इसको implement किया कैसे जाता है? So to implement it, there are two options over here. First option is called as the function overloading. Function overloading. अब ये क्या है? We are going to talk about it. And the second one is called as the function overriding. So ये क्या है? Overloading, overriding. We are going to talk about. जब हम लोग technically घुसेंगे, we are going to talk about it. In Java specifically, you understand it, in Java functions को ही method कहा जाता है. When you are in Java, the concept that we are going to understand from Java is nothing but the method overloading and method overriding. हम लोग method overloading और method overriding ऐसे सीखने वाले हैं. So यहाँ पे in this particular we could say case of polymorphism, you can do it. Technically आप करोगे कैसे? You can do it by either going for function overloading, that is method overloading, or method overriding. इसी मेथड ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग को कहा जाता है कंपाइल टाइम. इट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ये सभी टेक्निकल टर्म्स है. दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स. पॉलीमॉर्फिज्म, एंड दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. Now ये सभी पार्ट, whatever the example, the technical example that I'm talking about, ये आज नहीं सीखेंगे. We are not going to look at this. We are not going to look at the example of this, क्योंकि इसका example भी काफी बड़ा है. So it is not even possible unless until you start with the programming. So maybe ये सारी चीजें भी, it is going to be an example on day 5. So इसका example when we are going to complete this inheritance, यानी कि inheritance के पास जब जाने वाले on day 5 वहीं पे before starting with the inheritance, maybe these examples we are going to complete it. But understand it so far. यहाँ तक उसको नॉन टेक्निकली समझो कि what exactly the polymorphism is. Because these are the minor pillars, these are optional to be handled. अगर होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा. So depending on which language you are using, so उस language के basis पे syntactically थोड़ा सा change होता है, थोड़ा सा change होता है. So even we could say the overriding rules remain same, but as per the language, as per the syntaxes that are used into the language, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं changes देखने को मिलेंगे. That's it. Otherwise everything remains same. Let me know, is polymorphism clear to you? If you are not aware about these technical examples, leave it. यहाँ तक. Is the polymorphism clear to you? Very good. Very good. Next, the second minor pillar that we have is called as, we could say, concurrency. Concurrency. This is the second minor pillar. What does the concurrency says? Concurrency says executing multiple tasks. Executing, I'm clear. Executing the multiple tasks at the same time. At the same time. It is called as concurrency. Suppose आपने एक program लिखा है and into the program there are these two tables that I want to print. एक 2 का भी टेबल, एक 3 का भी टेबल है, and I want to print them simultaneously. यानी कि 2 का भी टेबल एक साथ 3 के साथ प्रिंट होना चाहिए, यानी कि 2 1 2 3 1 3, ऐसे पैरेलली दोनों भी काम होने चाहिए. ऐसे लेट्स से देयर आर मल्टीपल टास्क. इवन इफ यू लुक एट माय एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस. सो यू माइट बी एबल टू सी कि यहाँ पे लेट्स से the journal has been opened up where I am able to write something. Not only that, on my right hand side onto the second monitor we have the chat window of this Zoom.
We have the participants window of this Zoom. Maybe I have the controls where I can start the recording, stop the recording. Maybe I am having this VS Code that is opened up right over here. Can you see at the same time there are multiple tasks that are running onto my operating system? This is what we called as the concurrency. At the same time, एक ही टाइम पे multiple tasks at the same time execute हो रहे हैं, इसे ही कहा जाता है concurrency. Now, in the programs, like when you are going to create a particular program, so that program might be having a requirement where multiple tasks has to be executed at the same time. जैसे सपोज आप कुछ तो फाइल रीड कर रहे हो, लेकिन फाइल रीड करने में काफी टाइम ले रहा है, सो उसके पैरेलली क्या करोगे? मे बी कुछ अलग टास्क करोगे, मे बी यू आर ट्राइंग टू डिस्प्ले समथिंग टू द यूजर, मे बी यू आर ट्राइंग टू टेक समथिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, मे बी आप कुछ एनिमेशन यूजर को दिखा रहे हो, मे बी इट कैन हैपन दैट देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इनटू द बैकग्राउंड, फोरग्राउंड के ऊपर लेट्स से यूजर कुछ अलग एंटर कर रहा है. इट कैन हैपन इट इन दिस वे. जैसे आपने नोटिस किया होगा, लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू ब्राउज फॉर वी कुड से, और व्हेन यू ओपन अ यूट्यूब, तो यूट्यूब के अंदर आप वीडियो को क्या कर सकते हो? मिनिमाइज कर सकते हो नीचे, एंड इवन यू कैन ब्राउज द रेस्ट ऑफ द वीडियोस. तो इसे कहा जाता है वी कुड से कॉन्करेंसी, वेयर द मल्टीपल टास्क्स आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम. नाउ टू परफॉर्म दिस, ये परफॉर्म करने के लिए जनरली वी हैव टू क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स. We have to create what? Multiple threads. And for this we have to learn multi-threading. We have to learn the multi-threading. So what is multi-threading? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है वैसे. So this is a concept of operating system which has been supported by the languages now, कि जो languages के अंदर सपोर्ट किया जाता है. So this is what we are going to understand. हम लोग OS लेवल पे जाके नहीं देखेंगे, but we will be definitely looking it into the Java. That means I can also mention that we are going to see this multi-threading in Java. यानी कि इसके साथ साथ ये जो reflection annotation है, इसके साथ साथ we are also going to talk about multi-threading. यानी कि ये भी करने वाले हैं. We are going to do it. So concurrency, it is like an optional pillar, but definitely it is required for the bigger projects. जब आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, so you cannot just rely on executing the task one after the another. अच्छा, एक खत्म हो गया फिर दूसरा, दूसरा खत्म हो गया फिर तीसरा. You cannot rely on to it. And this is where you require these multiple threads to execute. You require this multiple tasks to execute at the same time. This is what the concurrency is. Concurrency is nothing but multi-threading. Multi-threading in Java. Let me know. Is the idea of concurrency clear to you? है क्या? Multi-threading देखने वाले. Maybe at the last we are going to say this, but we are देखने वाले. Very good. Now the final minor pillar of OOP, and the final minor pillar is going to be persistence. What is persistence? What is persistence? Do you know that? What is persistence? Persistence. What is persistence? It is nothing but persisting or storing the data permanently. Storing the data permanently. This is what we called as the persistence. Now imagine that you have entered the user details, यानी कि आपने employee के details, person के details, you have entered it from the program, whatever the employee that you have created, person that you have created, date that you have created, ये सारी चीजें आपने user से input ली from the console. Now when you take this input from the user, first of all the entire data is stored into the data types, यानी कि वो सभी variables जो आपने create किए वहां पे store होता है. But the moment you terminate the program, जैसे ही program को terminate किया जाएगा, the entire thing that is stored into the program is being removed. क्योंकि वो memory से program चला जाएगा तो everything is going to be deleted. How do I store the data permanently onto my hard disk? Whatever the user is going to enter, let's say the person details, employee details, product details, जो भी user enter करेगा, how do I store it? उसको मैं store करूँ कैसे? Where do I store it? तो उसको store करने के लिए, to store it permanently, I should have a way. And the way that the Java is provided is by doing the file IO. यानी कि file IO करो, या फिर there is one more way the Java has given. It is nothing but your JDBC, that is Java database connectivity. So Java is provided two ways. कि जहाँ पे Java कहेगा कि whether you want to store the data permanently, you have got two options. Either you perform file IO, where you start writing the entire contents into the file,
or you perform the JDBC where you start storing the entire data into the database. This is what the persistence is. Persistence in every language is the same. Concurrency and persistence in every language is the same. Concurrency in the sense, अगर आपको प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करना है, is that particular language providing you the option to create multiple threads? Yes, it supports concurrency. For a particular programming languages, whatever the inputs that are taking from the user, do you want to store that data permanently? Yes. If you want to store that data, what are the options? File IO is the common option, but along with that, the Java is providing the option of JDBC. This is what are the minor pillars. Let me know, are the minor pillars clear to you? These are the minor pillars. Let me know, are the minor pillars clear to you? ये सभी देखना है स्पेसिफिकली इन जावा, बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट ओपी, जब मैं ओपी की बात करूंगा, ओपी कंसिस्ट ऑफ दिस बोथ मेजर एंड माइनर. मेजर आर कंपल्सरी, माइनर आर ऑप्शनल, लेकिन हम लोग सभी देखने वाले, यानी कि व्हेन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर जावा, जब जावा लास्ट तक खत्म होगा, all these OP are going to be finished. ये पूरा OP खत्म हो जाएगा. So we are going to see an example of abstraction. We are going to see encapsulation. We are going to see modularity. We are going to see hierarchy, association, inheritance. दोनों भी देखेंगे. We will be looking at, we could say polymorphism. We will be looking at concurrency, जहाँ पे multithreading करने वाले. We are going to look at persistence, जहाँ पे हम लोग file IO करने वाले. So each and every OP, we could say pillar, we are going to explore it. हम लोग explore करने वाले through this entire modular batch. This is what the entire OP or object oriented programming concepts are. Let me know, are these concepts clear to you? क्या ये सभी concepts clear हैं? Very good. Very good. Fine. So now I could say, after completing this OOP concepts, now it's time that we start entering into the language. अब थोड़ा थोड़ा हम लोग इस language के अंदर enter करते हैं, and when we are going to enter, we are going to start discussing about what are the prerequisites for it, यानी कि किसी भी language के साथ start करने के लिए the installations that we require, we could say the versions that we are going to focus on, and what are the IDs that we are going to use. तो ये थोड़ा सा हम लोग अब थोड़ा सा discussion करते हैं. So maybe we are going to do it in this way. थोड़ा theoretical part we are going to cover it up. Maybe उसके बाद एक छोटा सा break लेते हैं हम लोग, and then we will start with our first Hello World program. हमारा Hello World program फिर हम लोग start करें. Let us start talking about now the Java. Let us now enter the Java officially. Let us start about it. Let us start with the Java history. थोड़ा सा history को समझते हैं. Just a slide of history so that you know how the Java has evolved. So in 1991, the James Gosling, the Patrick Norton and his team, they decided कि कुछ एक ऐसी language हम लोग थोड़ी सी create करेंगे which is going to actually execute it onto the smaller devices. अब earlier C language भी था, C++ भी था, these languages were existing, but they want to create a particular language, a simplest language, एक बहुत ही simple language to use, जहाँ पे let's say वो pointers की जो complexity है उन सबको हटा के let us create such particular languages which can actually learn on smaller devices, यानी कि छोटे छोटे devices के ऊपर. Even right now, if you talk about कि जब हम लोग efficiency की बात करते हुए always say कि use a C, use a C++, and why? Because they are the lowest languages. So their aim was to create such a language कि जो efficient भी हो और वो छोटे छोटे devices पे भी run हो जाए. Now when you talk about the smaller devices, as we know कि छोटे devices में बहुत ज़्यादा we could say there is no any processing power into it. उसके अंदर लेट्स से कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी नहीं होता है. इट रन्स ऑन टू द बैटरीज, यानी कि उसके अंदर मेमोरीज भी काफी कम होते हैं, एंड इट इज आल्सो गॉट इनटू लेस इनटू द पावर. सो ऐसे छोटे डिवाइसेस के ऊपर हाउ द प्रोग्राम लैंग्वेज कैन बी सो इफिशिएंट, दिस इज व्हाट दे वर वर्किंग ऑन. Now when they started working on to it, initially the project that they were started, उसका नाम उन्होंने रखा था as a green project. So when this developer started working on to it, these developers खुद वो C++ background के थे, so that means they were having the basic knowledge of C++, and because they were coming from the Unix background, they started developing using the C++ language, and they created the first language, or we could say on top of the C++, उन्होंने एक wrapper language create किया. What they created was a wrapper language, and this language initially was called as the Oak language. उसका initially नाम जो रखा गया था, it was called as the Oak language. Later on, it was been renamed as a Java.
इन 1992 यानी कि एक साल काम करने के बाद when this project we could say the green project have was been a successful, तो एक साल के बाद they created this particular we could say a product, एक सिंपल सा प्रोडक्ट था जिसका नाम था स्मार्ट रिमोट कंट्रोल. इट वाज स्टार 7. द नेम ऑफ द प्रोडक्ट वाज स्टार 7. एक स्मार्ट रिमोट कंट्रोल था कि जिसके अंदर दिस जावा लैंग्वेज वाज बीन डिप्लॉयड, यानी कि इस लैंग्वेज को यूज करके डेवलपमेंट किया गया था. एंड इट वाज अ स्मार्ट रिमोट, जैसे हम लोग स्मार्टफोन कहते हैं वैसे कुछ स्मार्ट रिमोट था. बट एज इट वाज नॉट सो पॉपुलर, वो इतना पॉपुलर नहीं बना. एंड देन द टीम डिसाइडेड कि चलो ये प्रोडक्ट पॉपुलर नहीं हुआ, लेट अस फोकस ऑन वर्किंग ऑन द सेम लैंग्वेज एंड लेट अस फाइंड आउट एन अल्टरनेटिव वे. ड्यूरिंग द सेम टाइम, उसी वक्त पे इनटू द 90s, द इंटरनेट वाज गेटिंग पॉपुलर, यानी कि डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब तब पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था. एंड द रश वाज फॉर क्रिएटिंग अ पॉपुलर ब्राउजर्स. वहां पे वो ब्राउजर्स का एक वॉर चल रहा था. सो मल्टीपल कंपनीज वर क्रिएटिंग देयर ओन ब्राउजर्स. Similarly, at the same time, even these people created one of their browsers called as the Hot Java browser. उस वक्त इन्होंने भी एक ब्राउजर क्रिएट किया था जिसका नाम था हॉट जावा ब्राउजर, जिसका काम यही था टू ट्रांसलेट द हाइपर टेक्स्ट यानी कि HTML पेजेस को लेट्स से टेक्स्ट के ऊपर यानी कि स्क्रीन के ऊपर शो करना, एज ए GUI शो करना. एंड व्हेन दे क्रिएटेड दिस हॉट जावा ब्राउजर, उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज इंट्रोड्यूस की, दैट यू कैन यूज दिस जावा लैंग्वेज टू क्रिएट दिस पेजेस डायनामिक. यानी कि जो पेजेस आप HTML के पहले देखते थे, वट एवर द HTML पेजेस दैट वर देयर दैट वाज गेटिंग रेंडर्ड इनटू द ब्राउजर्स, दीज पेजेस वर द स्टैटिक पेजेस. तो इनको डायनामिक बनाने के लिए द जावा पीपल यूज्ड दिस जावा लैंग्वेज विद इन देयर ब्राउजर्स कॉल्ड एज द हॉट जावा ब्राउजर. नॉट ओनली दैट, दिस वाज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यानी कि वो डायनामिकनेस जो होता है कि वहां से लेट्स से द क्लाइंट इज एबल टू पुश समथिंग, the client is able to put down his details and the details are getting stored onto the server. ये जो client server architecture होता है, even that was been able to be possible into that browser. And this, the Java that they used within that browser, उन्होंने कहा था as a applets. So the Java code that was executing within that particular browser, उसको उन्होंने नाम दिया था as the applets. And this was the first popularity when the Java got. It was into the 90s when there was a browser war that was going on. एंड फ्रॉम हियर देयर वाज नो टर्निंग पॉइंट कि जहां से जावा की हम लोग जो कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी जो थी वो काफी बढ़ने लगी. Now, when you talk about the different Java versions, when they started giving out the Java as we could say a development kit for the developers, so these were the different versions that were launched that are available so far. So, well, the first version of Java that was released was into the 1996, which was called as the Java 1.0, or we could say the JDK. JDK stands for the Java Development Kit. So this was the first version that was being available into the 1996, and later on you can see different versions into the different years. लेकिन यहाँ पे कुछ versions को note down करने लायक है because those are really important versions. Java के पहले वर्जन के बाद there was a version called as the Java 1.2, which was released in 1998, जहां से उन्होंने एब्रीविएशन दिया था J2SE, जिसका मीनिंग था it's the second version of, or we could say the major change into the Java, the second version of Java, and this SE stands for the standard edition, कि जहां पे उन्होंने नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करना स्टार्ट किया था. where they say this is the Java 2 J2SE, in the sense Java 2, this is the standard edition that we have, and this was the version into which the Java collections were introduced. यानी कि सबसे पहले वर्जन्स में देयर वाज नो सपोर्ट फॉर द कलेक्शन फ्रेमवर्क, ए द वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क यहाँ पे बात कर रहा हूँ. सो दिस कलेक्शन फ्रेमवर्क वाज नॉट अवेलेबल इनटू द फर्स्ट वर्जन्स, बट ये रिलीज किया गया था इन 1998, where the version was the J2SE, the most popular version, J2SE 1.2. Now from here on, वो नेमिंग कन्वेंशन वैसा ही रहा, J2SE 1.3, J2SE 1.4, J2SE 5.0. बट ये जो 5.0 वाला वर्जन था 1.4 के बाद, दे रिलीज द वर्जन कॉल्ड एज द जावा 5, जिसे जावा 5 भी कहते हैं, J2SE 5 भी कहते हैं. दिस वाज द वर्जन रिलीज इन 2004, कि जहां पे एक और मेजर चेंज ऐड किया गया, दैट वाज नथिंग बट द जेनेरिक्स. यानी कि बिफोर जावा 5 टिल जावा 1.4, जेनेरिक्स का सपोर्ट, जेनेरिक्स पॉसिबल था बट इट वाज नॉट एन प्रॉपर सपोर्ट ओवर देयर, यानी कि जो सेफ्टी था वो नहीं था. So this is where the type safety was introduced with the concept of generics in the Java's 5th version. So again, this is very important versions. Java 1.2 में major changes add हुए, that is the collection. और Java 5 में जो add हुआ, that was nothing but the generics. Not only that, generics के साथ add हुआ enum, और उसके साथ add हुआ annotations. The annotations which are so popular now.
यानी कि without these annotations you cannot imagine working with the advanced Java. So this was the two important things that was added into the fifth version. Later on, again, the development happened, but the next change that they did was changing the abbreviation that they used, called as the J2SE. यानी कि Java 5 तक it was the same name that they were using. It is called as the J2SE, Java 2 Standard Edition. अब क्योंकि वो second version नहीं था, so they changed it from the sixth version called as the Java SE, जिसका नाम था Java Standard Edition. And now the same name has been followed for all the versions that are available. अब by default वो कहते हैं it is nothing but the Java Standard Edition. Now we have the sixth version, we have the seventh version released in 2006, released in 2011. But the major change that we are able to see is the Java 8th version, where they started the support for the functional programming. यानी कि Java 8 version ऐसा version है कि जिसमें सबसे पहले implementation of the functional programming was given by providing the concepts of streams and lambda expression. So Java 7 tak, if you talk about till Java 7, Java is only an object-oriented programming language. यानी कि यहाँ तक Java क्या है? So far, what is Java? So till 7, it is the Java as an object-oriented programming language. लेकिन अब Java 8 onwards, ये यहाँ से वो क्या है? So from here on, it is an object-oriented programming language plus it is the functional programming language. Plus it is the functional programming language. यानी कि अब जावा दोनों भी है till Java 7. I'm saying till Java 7 तक it's an only OOP language. यहाँ तक सिर्फ OOP language, but from here on it is OOP plus functional programming language. And this was the major change that was given into the Java 8 version. If you notice that next to this Java 8 there is written as LTS. LTS stands for long term support. यानी कि एक ऐसा वर्जन कि जिसको जावा के लोग काफी सालों तक, काफी आने वाले आगे सालों तक सपोर्ट करने वाले. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सपोर्ट, इट इज सपोर्ट रिलेटेड टू द बग्स विद इन दोज वर्जन. हो सकता है कि कुछ क्लासेस क्रिएट हो चुके हैं, हो सकता है कि देयर आर सम ऑफ द डिफरेंट वी कुड से मॉड्यूल्स, द पैकेजेस दैट दे हैव क्रिएटेड व्हिच आर हैविंग सम बग एट द रन टाइम. So whenever you are going to have these bugs, you can report it, we could say, to the Java people, and they are going to help you to recover, or we could say to resolve those bugs. So ऐसे काफी ज्यादा वर्जन है इन बिटवीन कि जहां पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं होता है. यानी कि कुछ ऐसे वर्जन होते हैं कि आगे आने वाले नए वर्जन में उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. बट व्हाट इफ यू वांट टू यूज द सेम वर्जन और उसी वर्जन में आपको सोल्यूशन चाहिए, दिस इज वेयर यू कैन गो फॉर द LTS वर्जन, जिसे कहा जाता है जावा. एंड दीज आर द वर्जन दैट आर जनरली बीन यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट. यानी कि जिन जिन वर्जन को लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है, जनरली उन वर्जन को यूज किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट. So this was the version into which the functional programming was introduced. उसके बाद Java 9 आया मार्केट में, Java 10 भी मार्केट में आया. बट अगेन देयर वाज द मेजर रिलीज, यानी कि 9 और 10 में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सभी को सॉल्व करके the Java 11 was created, which was again an LTS version released in 2018. Again, then there was a different version that was released every single year. And by 2021, we could say the Java 17 was into the market, which is again an LTS. That means again it's an long-term support version. उसके बाद again there are different versions of Java that are there into the market. but लेकिन ये जो versions है, these are the LTS version, whether it's a Java 8, Java 11 और Java 17. Now इसके आगे बाद आने वाले versions अभी तक कंपनी में यूज नहीं होते हैं. कंपनीज के अंदर जितने भी लेगेसी प्रोजेक्ट्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट लेगेसी प्रोजेक्ट्स, दिस लेगेसी प्रोजेक्ट्स आर स्टिल इनटू द Java 5. वो Java 5 में है या फिर वो Java 8 में है. Understand it? Companies के पास unless and until someone pays, the projects are not going to be shifted to the newer version. ऐसा नहीं होता है. No one does the job for free. So that means whatever the legacy projects are there, जितने भी बड़े बड़े projects है, whether it's the project related with the banking domain, whether it's the project related we could say with the management softwares, वो सभी अभी तक पुराने languages में है. Right now we could say still people are moving from Java 8 to Java 11. यानी कि कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं from Java 8 to Java 11 or till Java 17. New projects are definitely getting created with the newer versions of Java, लेकिन older projects in company do exist. क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो Java started in 1996. तो जितने भी प्रोजेक्ट्स 10-15 साल पहले के हैं, whichever are into the company, still uses the Java 8 or max to max. Now they are shifting to the Java 11. Generally, companies prefer the languages which are more stable और the versions which are more stable. जो stable latest जो होंगे उनके पास वो generally avoid करते हैं. जितने stable versions होंगे, because the software needs to be a lot of stable. So जितने भी stable versions होते हैं, generally they go for these versions and they upgrade to these versions. That's why it is important to understand the Java
as an OP and also as a functional. OP as understand क्यों करना है? Because you might be working on to the legacy projects. हो सकता है कि आप कुछ legacy projects के ऊपर आपको deploy किया जाए. Or maybe we could say you are going into the companies which are using the latest versions of Java. You must be able to understand the functional programming part. So these are the different versions of Java, out of which we will stick to the middle of something. यानी कि ना हम लोग बहुत पुराने के पास जाएंगे, ना हम लोग एकदम से नए के पास जाएंगे. We will stick at the we could say center part of it. We are going to use this Java 11 as we could say our point from where we are going to start with the development. यानी कि the one that we are going to download, the Java that we are going to download, तो हम लोग latest वाला Java download नहीं करेंगे. We will stick with the Java 11. Reason बताता हूँ. If you go for the Java 17, you won't be getting the features of Java 8 and the earlier versions of the Java. यानी कि Java 7, Java 8, यानी कि OOP की जो मुझे रिक्वायरमेंट है, the concepts that were available earlier in Java, Java 7 तक जो अवेलेबल थे, Java 8 तक जो अवेलेबल थे, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे. You won't be able to get it. You won't be able to get the classes. Maybe अगर आप use करोगे तो you will get the errors. Because I want to learn even the previous one plus the functional programming, I will stick to Java 11 because Java 11 provides me the feature of both. यानी कि वो मुझे earlier versions of Java के भी कुछ syntaxes, कुछ classes को use करने में help करता है, and the later versions के भी, यानी कि Java 11 से जो भी आ चुका है, so वो भी मुझे help करता है. That's why we are going to stick with this Java 11. Let me know. Are the versions clear to you first? वैसे इसमें कुछ ये नहीं है, बट theoretically you must understand. क्वेश्चन आ सकता है कि सर इनटू द इंजीनियरिंग वी हैव डाउनलोडेड वी कुड से द ओरेकल जेडीकेस वगैरह कुछ 2021 या फिर हम लोग 17 यूज कर चुके हैं. दैट्स फाइन. इफ यू हैव डन इट दैट्स फाइन, बट आई एम गोइंग टू स्टिक विद दिस. दैट्स द रीजन. Now, when you talk about Java platforms, Java platforms क्या है? So it is the Java that is provided for the different platforms. यानी कि Java कहाँ पे यूज कर सकते हो, और हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग उन्होंने जेडीके बना के देके रखा है. So here if you want to develop the applications for the smart cards, छोटे छोटे जो स्मार्ट कार्ड्स आते हैं मार्केट में, तो उसके लिए अगर आपको कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ प्रोग्राम्स लिखना है, so there is this platform called as the Java card that you can use it. आप उसके लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हो and you can do the development. If you wish to use this Java to create the applications for the feature phones, smartphones नहीं, smartphones are the phones which are going to have the operating system into it. मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं. I'm talking about feature phones, Symbian phones जो पहले आते थे, तो उनके अंदर अगर कुछ आपको एप्लीकेशंस को डेवलप करना है, इफ यू वांट टू हैव सम एप्लीकेशंस एग्जीक्यूटिंग इनटू दिस फीचर फोन्स, सो दिस इज वेयर जावा हैज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज द जावा माइक्रो एडिशन. ये हम लोगों ने यूज किया है. वी यूज्ड टू यूज इट when the Nokia phones were really popular having the Symbian operating system. तो उस we could say Symbian के ऊपर जो हम लोग applications बनाते थे, so this is where this Java micro edition was used, कि जहाँ पे you can create those particular small applications which can be actually executed onto the devices having low power and low memory. तो आपके Nokia phones आपको याद होंगे, हार्डली कितना 5-10 MB का रैम हो सकता है उसके अंदर. So it is going to have battery around we could say just 1000 milliamp of battery. तो उसके ऊपर जनरल जो applications develop होंगे, there is another platform called as the Java ME, also called as the micro edition. Then the one that we are going to use is the Java SE. यानी कि जो versions हम लोग बात कर रहे थे, the versions that we talked about, this is nothing but the standard edition versions, which is used to develop the application for the desktops. यानी कि आप console based applications create करो, या फिर desktop के applications using GUI आप create करो. So for all this, the one that we use is called as the Java Standard Edition. Not only that, what if I want to develop not the desktop applications, but I want to create the web applications? So web applications अगर आपको create करने हैं, this is where you have to go for the Enterprise Edition, also called as the Java EE. यानी कि जो आप companies में development देखोगे, this is where they uses the Java EE, or we could say the Enterprise Edition, where you are generally using it to create the web applications. बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन जहां पे आपको बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज की जरूरत है. So this is the enterprise edition that they have created called as the Java EE. So depending on your requirement, आप उस प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हो. The one that we are going for is the Java SE. It is called as the standard edition, where we will be learning the Java and we'll be learning how to develop those applications using this as a console-based applications or the desktop applications. Now how to install it? यानी कि ये जो Java SE की हम लोग बात करें, we are talking about the Java SE. How do we install it? So install करने के लिए यहाँ पे दो चीजें लगेगी. If we talk about the installation, let me mention it over here. So that's the installation. We require two things. The first thing that we require
is the JDK, which is also called as Java Development Kit. हमें सबसे पहले ये चाहिए. We need the JDK and we need an IDE, which is called as the Integrated Development Environment. Integrated Development Environment. These are the two things that we require. See, अगर आपके पास IDE ना भी हो, even if you don't have an IDE, that's fine. You can work with the editors. You can work with an editor, but editors are having some limitations. Editors are having some limitations. इनके पास कुछ limitations है, because of which we are going to go for the IDEs. तो हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए. The first thing we require an JDK, we require an IDE. So for this particular JDK, अगर आपको JDK को download करना है, now from where to download it? So to download it, first of all, go on to the, you could say, Google and search for Adoptium JDK. Search for Adoptium JDK. So this is the Adoptium. This is the, we could say, the open source JDK that we need to download. Generally, दो types of JDKs होते हैं. एक type of है जो कि paid versions में भी है. The one that gives the Oracle gives it. So even you can go for it. Maybe I can say Oracle JDK. तो आपको Oracle की वेबसाइट मिल जाएगी कि जहां से आप JDK डाउनलोड कर सकते हो. और you can go for an open source JDK कि जहां पे कोई restrictions नहीं है. There are no restrictions onto the classes that you are going to use. A free version, an open source version of it. So आप दोनों के पास जो आपको we could say comfortable हो, whatever you are comfortable with the earlier ones, you can go for it. But because this is an open source, this is free of cost, free of available to us. All the classes are already free of it, so you can go for this. अगर आप Oracle के पास जाओगे तो definitely there some of the classes are like the commercial ones. यानी कि अगर actually paid करोगे, and then you are going to get it. Otherwise, they have restricted some of it. It is just the only basic difference. Otherwise, both works fine. दोनों भी अच्छे से काम करते. There's no problem with it. So I'm going to go for it, which is then free and open source. It's going to be an Adoptium JDK. You just search for it, Adoptium JDK. You go for that particular, we could say, page. Just click on it. And onto this page, you have the option to download that particular JDK. But wait, do not just go and click onto the download. यहाँ पे जाकर के click मत करो, because this download, look at the version. जरा इस version को notice करो. Hey, what's the version? The version, it says JDK 25. Can you see that? It's the LTS, again long-term support version. Java 25 market में आ चुका है. So I don't want the Java 25. Click on other downloads. जरा इस other downloads के ऊपर click करो. When you go for other downloads, it tells you whether you want to go for Java 17, Java 11, Java 21 or Java 25. Hey, can you look at this? यहाँ पे सारे versions के आगे they have written this LTS versions, यानी कि long term support versions. अब इन वर्जन से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा वर्जन का जावा चाहिए, यानी कि उन क्लासेस तक ही आपको वहां पे जेडीके मिल जाएगा. नाउ इट इज लाइक दिस. सपोज जावा 11 तक कुछ क्लासेस डेवलप हो चुकी है, एंड इन जावा 17 दे हैव एडेड मोर क्लासेस. लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास डेट क्लास था, अब डेट के साथ साथ दे हैव एडेड समथिंग कॉल्ड एज अ टाइम क्लास. अगर वो जावा 17 में टाइम क्लास है तो जावा 11 में नहीं मिलेगा. व्हाई? बिकॉज यू हैव ओनली दोज क्लासेस दैट आर प्रेजेंट इन जावा 11. 17 के पास जाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगे. सिमिलरली यू गो फॉर 21, कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा. इवन इफ यू गो फॉर 25, कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा. लेकिन वॉट एवर यू गेट एक्स्ट्रा अलॉन्ग विद दैट, सम ऑफ द क्लासेस आर गेटिंग डेप्रिकेटेड, यानी कि कुछ चीजों को वहां से डिलीट भी किया जाता है. सो हो सकता है दैट यू कैन गो फॉर द लेटेस्ट वर्जन, यू कैन गेट समथिंग न्यू, बट द ओल्डर वॉट एवर द क्लासेस वे आर देयर, मे बी उनको शायद वहां से रिमूव किया जा सकता है. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टिक विद द मिडल वर्जन ऑफ इट. इसलिए मैंने कहा कि मिडल वर्जन के पास स्टिक करेंगे, विल गो फॉर द जावा 11. क्योंकि जावा 11 तक whatever we have used, we know that till Java 11, even the support for the earlier classes are there. Even the support for the OOP is still there. And that's why we will stick with the Java 11. So make sure you go on to this particular, we could say, adaptium.net website. इसके ऊपर जाओ, go for this Java JDK 11-LTS. और फिर इसके पास जाकर के you can go for the download. So if you are onto the Mac, you go for the Mac. If you are onto the Windows, go for the Windows. If you are onto the Linux, you can go for the Linux JDK as well. यानी कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, you can just go for it and make sure to download the JDK. Download the JDK. Do not click on JRE. JRE के ऊपर क्लिक मत करो. Download that particular JDK. So you just have to click on this download button. आप download button के ऊपर क्लिक करो and it is going to be downloaded. एक आपको executable file मिल जाएगी. You can click on that, double click on that, next, 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 and finish. That's how you are going to do it. और आपका JDK install हो जाएगा. First, let me copy this, we could say, link.
and maybe I can say to download, click on below link. Click on below link. So you can download it over here. Okay, that's the link. Give a link here. And into this link, whenever you are going to go for it, make sure to download the JDK 11 and install it. उसको डाउनलोड भी करो, यू जस्ट डबल क्लिक ऑन टू इट, क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 एंड जस्ट इंस्टॉल इट. उसको आप इंस्टॉल करके रखो. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डाउनलोड द जेडीके. अब वो जेडीके एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट. इफ यू टॉक अबाउट एडिटर, आपके पास एडिटर ऑलरेडी है, यू कैन स्टार्ट राइटिंग द एंटायर कोड इनटू द नोटपैड. यानी कि अगर आप एडिटर की बात करोगे, यू कैन यूज द नोटपैड, you can use the VS Code, you can use, we could say, the Notepad plus plus, whatever the editors that you have. Editors in the sense, as a particular application which is going to help you to edit the files, whether it's a text file, whether it's a C file, whether it's a CPP file, whether it's a Java file. जहां जहां पे we could say हम लोग सिंपल सा we could say कोड लिख सकते हैं या फिर टेक्स्ट लिख सकते हैं. all those files that are editable into an application is called as an editor. तो आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो इसमें से, doesn't matter. But the one that I generally recommend to the students is the ID. अब आप ID की बात करोगे, now you have multiple options over here. The one that I'm going to use, जो मैं यहाँ पे use करता हूँ, that is an STS. STS generally stands for the Spring Tool Suite. I also use something called as the IntelliJ. I also go for it, which is called as the IntelliJ. Or you can also go for the Eclipse. So there are multiple options, whether you can go for STS, whether you can go for IntelliJ, whether you can go for Eclipse. आप किसी के भी पास जा सकते हो. If you are like working only into the Java, I would definitely recommend you can go for the IntelliJ. आप IntelliJ के पास जा सकते हो. This is one of the smoothest ID that are available for the Java core Java development. If you are interested to go for, we could say, advanced Java, अगर आपको Spring में भी काम करना है, then definitely I recommend go for STS. आप Spring Tool Suite के पास भी जा सकते हो. And if you are again working with the Java, लेकिन you are comfortable with the Eclipses that you have used earlier into the engineering, you can definitely go for the Eclipse. तो यहाँ पे multiple IDs हैं that are available into the market. आप जिसके साथ comfortable हो, you can go for. Now there are this category, because मैं already तीनों भी बता के रखता हूँ. Instead of sticking for only one, understand the requirements and you start using it. अगर आपका ऑलरेडी फिक्स है that you wish to go for, we could say, the CDAC courses, आपको CDAC courses के पास जाना है, स्पेसिफिकली अगर आपको एडवांस कंप्यूटिंग का कोर्स करना है, if you want to work with it, you stick with the STS ID. आप STS को यूज करना स्टार्ट करो. If you are going for, we could say, the mobile computing courses, या फिर आपको कंपनी के लिए कुछ प्रिपरेशन करना है, you are here just for learning, अगर आपको कुछ लेटेस्ट चीजों के साथ थोड़ा सा ट्राई करना है, I would definitely recommend go for the IntelliJ. This is one of the best IDs into the market for Java, I could say, specifically for the core Java if you want to go for. It's called as an IntelliJ. So you can definitely go for it. I would be definitely using it. मैं यही यूज करने वाला हूँ IntelliJ. In between अगर आपको कुछ एग्जांपल्स चाहिए, I will also give it with an STS. तो मैं STS के साथ भी दूंगा, I will give it with both of it. तो you can go for this IntelliJ or you can go for this STS. थोड़ा सा डिफरेंस बता के रखता हूँ. Spring Tool Suite 4 थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू द IntelliJ. इट इज बिट स्लोअर एज कंपेयर टू द वी कुड से दिस सॉफ्टवेयर, बट ठीक है, दैट्स फाइन. इवन यू कैन वर्क विद दिस एज पर यू आर कंफर्टेबल. आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, आप उस हिसाब से उसको यूज कर सकते हो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एन आईडी. आईडीज के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इन दिस मॉडलर बैच जनरली जिसमें आप कंफर्टेबल हो, यू स्टार्ट यूजिंग. इंपॉर्टेंट इज कि हमें बस कंसेप्ट को समझना है. वेदर यू वर्क इट ऑन टू द एडिटर्स, अगर आपको एडिटर्स पसंद है, आप एडिटर्स यूज करो. इफ यू लाइक, वी कुड से, आईडीज, आप आईडीज को यूज करो. इट्स टोटली अप टू यू. सो नो रिस्ट्रिक्शन, एवरीथिंग इज गुड. सारा चीज अच्छा है, बस रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी कि आपका आगे का रिक्वायरमेंट क्या है. डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन चूज द आईडी. लेट मी नो, आर द इंस्टॉलेशन पार्ट क्लियर? ये कहां से मिलेगा वो भी बता देता हूँ. इट इज एवरीथिंग अवेलेबल. जस्ट नेक्स्ट 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 इंस्टॉल ही करना है. यू जस्ट गो ऑन टू द वी कुड से गूगल, यू जस्ट टाइप फॉर STS Spring Tools to download. It will take you to the website. That's nothing but the STS. यहाँ पे जाकर के you can just do the download. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. Whether you want it for, we could say, VS Code, यानी कि कुछ एक्सटेंशन चाहिए for this, you can go for it. अगर आपको let's say Spring Tool को ही डाउनलोड करना है, कहाँ पे गया वो लिंक? So this is the Eclipse. For the Eclipse you can just download it directly. तो जो भी आपको चाहिए वर्जन, you can just download it, मिल जाएगा. Whether you are onto the Linux, whether you are onto the Mac OS, whether you are onto the Windows. If not, you can definitely go for IntelliJ ID.
IntelliJ idea download. Once again, you search for it, IntelliJ download, click on the download IntelliJ idea. यहाँ पे मिल जाएगा, you can just download it. यानी कि हर एक we could say different ideas that are there into the market which works with the Java fantastically. So आप उसके बाद जा सकते हो and you can start working with it. Let me ये आर द इंस्टॉलेशंस क्लियर टू यू, ये आपका वी कुड से क्या कह सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी एंटायरली योर डिसीजन टू चूज व्हिच आईडी यू वांट, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. तो अगर आप मुझे भी कहोगे आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट जरूर रिकमेंड करूंगा, लेकिन एसटीएस चाहिए तो वो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू. बट आई एसटीएस इज ओके, यस एसटीएस इज फाइन. मे बी आई विल शो यू इन बोथ. इंटेलिजेंट में थोड़े से नहीं, क्योंकि वो एक नया वर्जन ऑफ आईडी है, तो कुछ अलग वे से वो थोड़ा सा काम कर, अलग वे से इन द सेंस वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक्स, वो डॉट क्लास फाइल्स वगैरह जो मैं इंटरनल्स की बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा इंटेलिजेंट में वो अलग वे से रखा जाता है. बट डेफिनेटली एट दैट टाइम आई विल स्विच टू एसटीएस, ताकि आप दोनों भी आईडीज के साथ थोड़े से कंफर्टेबल बनो. आई विल शो यू फॉर बोथ, डू नॉट डजंट मैटर. Yes, you can code it on anyone. You can code it on STS संगीता, you can code it on VS Code, और दोनों भी रहेगा, दोनों पे भी simultaneous करोगे तो भी चलेगा. So it still works, काम करता है. ठीक है, fine. Any questions so far, guys? यहाँ तक किसी को कोई questions? Have you understood so far? थोड़ा सा theoretical part we have looked at. We have understood what is OP, the installations, the versions, and I think after the break we will start with our first Hello World program. I will do it in this way. Break के बाद I will just take a poll कि कितने लोग generally are wishing to go for the main courses. Then based on that I will stick to STS. मैं STS को stick करूँगा. थोड़ा सा slow है, but that's fine. I will stick to it. एंड मे बी थोड़ा सा फंक्शनल प्रोग्रामिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा आगे, सो मे बी वी कैन स्विच एन आईडी टू इंटेलिजेंट. तो इससे फायदा दो होगा कि लाइक यू विल बी कंफर्टेबल विद बोथ द आईडीज, आप मल्टीपल आईडीज के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, तो आपको एक और एक्सपीरियंस भी उसके साथ मिल जाएगा. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आपको एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस, तो ऐसा भी कर सकते हैं. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. नोटपैड भी सफिशिएंट है, लेकिन प्रॉब्लम वही है. कैन यू सी दिस एज आई हैव रिटन, देयर इज सम लिमिटेशंस टू इट. कुछ लिमिटेशंस है एंड यू विल गेट द थिंग कि मैं क्या लिमिटेशंस की बात करूं, व्हाट आर द एग्जैक्ट लिमिटेशंस. मैं दिखाऊंगा अभी कि क्या प्रॉब्लम है वर्किंग विद द एडिटर्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या होता है. मेन कोर्स as I said, if you go for advanced computing it's STS, if you go for mobile computing it's intelligent. So depend उस हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन कौन से कोर्स में जा रहे हो, सिलेबस में क्या है. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट, डू नॉट वरी ऑन टू इट. लेट अस डू वन थिंग. It's already time, it's already 11 and it's time to take a break first. एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं पहले, and after the break we are going to continue. Let me pause the recording for a moment. Resume the recording. Yes, the recording is resumed. And now it's time that we go ahead and continue with our first program. We could say that's our Hello World program. So, yes, let me open that once again. I just closed that one. Modular CJ-17. That's the one. Okay. So let us start by creating our first application. And to create this first application, see, first of all, I'm going to do it by using an editor so that I can show you what are the things that we need to take care of. And then maybe we will go for an ID and we are going to create our first, we could say, project into it. So let's begin with it. Now, while using this editor, there are two options for you. Either you can go with, we could say, the VS Code. ये बस एक टेस्ट के लिए, only one application or we could say one program that I'm going to create. आप एक तो VS Code के पास जा सकते हो. You can definitely use a notepad, no doubt. आप notepad के पास भी जा सकते हो. Or you can use any of the editors available with you. Not only that, you have to install the JDK, the one that you have installed. And from the JDK, we are going to use some tools. यानी कि कुछ tools को भी हमें use करना है. So let us understand it. थोड़ा इसको समझते हैं and let us work with it first. So let us start by understanding what an JDK is. When you talk about the JDK stands for the Java Development Kit. What it stands for? It stands for
जावा डेवलपमेंट किट. सो व्हेन यू आर गोइंग टू इंस्टॉल इट, यानी कि जब आप एडोप्टियम जेडीके 11 डाउनलोड करोगे, so let me mention it, जब आप यहाँ पे एडोप्टियम जेडीके 11, so when you are going to download this particular version, so this particular version is going to bring you, ये आपके लिए क्या लेके आएगा, it is going to bring you some of the tools, ये कुछ यहाँ पे tools लेके आएगा इसके साथ में, it is going to bring some tools, plus it will bring some of the documentation, यानी कि how to use the particular tool, तो उसका कुछ documentation, some help documentation that it is going to bring up with along with it. Not only that, along with this, it is going to bring the rt.jar with it. यानी कि उस जेडीके के अंदर क्या क्या चीजें हैं, inside that JDK what do we have, inside that JDK we are going to have some tools, कुछ tools है उसके साथ में, we have some docs, कुछ docs भी है, we have an rt.jar. This is nothing but the jar file, the Java archive file, which consists of the predefined classes, which consist of predefined dot class files. And along with this, maybe I could say these are the core libraries that we get along with it. And along with it, we get an JRE, or we could say this entire core libraries, I can convert it in this way. What we get it is nothing but the JRE. What the JRE is? So this is nothing but the Java's runtime environment. Okay, what is this JRE? This JRE is nothing but the Java's runtime environment. And what this runtime environment consists of? ये JRE के अंदर exactly है क्या? So inside this JRE, we have the rt.jar, that is nothing but the core libraries. Okay, what do we have inside it? Are nothing but the rt.jar. This is nothing but the core libraries plus the JVM, which is also called as the Java virtual machine, which is also called as the JVM, Java virtual machine. Understand it, what we get when you are going to download the JDK. What does the JDK consist of? So the JDK consists of the tools, the docs plus the JRE. What is the JRE? ये JRE के अंदर क्या है? What does the JRE consist of? So the JRE consists of the rt.jar, यानी कि the core libraries that we require. जैसे for example, into the case of C programming, you are using the printf. लेकिन printf आ कहाँ से रहा था? So the printf was coming from the stdio.h library. So ऐसे ही सभी libraries जो predefined set of libraries है Java के अंदर, this is present inside this rt.jar, also called as the runtime Java archive, inside which all the libraries are been kept, and along with it we get a JVM, inside which is JVM के अंदर आपका Java का कोड एग्जीक्यूट होता है. Understand it, where your Java codes execute, your Java code does not execute directly on top of OS. वो OS के ऊपर execute नहीं होता है. It executes within this JVM, inside this Java virtual machine. Now, what this Java virtual machine is, what it consists of, and how the Java code executes, we will talk about it. ये सारा चीज हम लोग बात करेंगे. But first, let us build this particular program and let us just execute it. Well, execute करते हैं फिर समझते हैं step by step. But understand it, JDK that you are going to install, जो भी JDK आप install करोगे, this is what you are going to get. Now, when you are going to download, if you have seen that particular website, जो मैंने website आपको दिखाई थी, you will be able to see that the JDK, the Java Development Kit के साथ साथ there was an also option to download the separate JRE, यानी कि Java Development Kit उन लोगों के लिए है. This is for those who are developing the applications, but JRE is for those who are just wishing to deploy the applications. यानी कि अगर आप एक क्लाइंट हो, क्लाइंट इन द सेंस अगर आप किसी एक कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल एक शॉप के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर वी कुड से ग्रोसरी स्टोर के लिए, इफ यू आर क्रिएटिंग एन जावा एप्लीकेशन और वो एप्लीकेशन उसके मशीन पे जाकर के डिप्लॉय करना है, दैट मींस इट हैज टू बी ओनली एग्जीक्यूट ऑन देयर मशीन्स. सो दिस इज वेयर यू कैन डाउनलोड द सेपरेट जेआरई, क्योंकि वहां पे उस मशीन पे टूल्स और डॉक्स की जरूरत तो नहीं है. So that means there are no any tools that are required for compilation, no any tools that are required to look at, we could say, the structure of those dot class files. यानी कि बहुत सारे से tools या फिर इसका documentation जरूरत नहीं है. What we require are only the core libraries and we could say the JVM for the execution. तो जहां जहां पे सिर्फ deployment की बात आएगी, you require the JRE. But जहां जहां पे development की बात आएगी, wherever you want to develop those applications, this is where you require the JDK. यहाँ पे आपको JDK की जरूरत पड़ेगी. So that's the difference. So right now when you are going to download, make sure you download the JDK. Do not download the JRE. JRE के साथ आप development नहीं कर सकते. It is not possible. Only the JDK can be used to develop the applications.
So once you have downloaded, you have got all those things. अब इसको check कैसे करें? Now to check it, there are two options. यहाँ पे दो options हैं. The first thing is like you can go on to the command prompt. आप command prompt को open करो and you can check the version. आप यहाँ पे जाकर के version को check कर सकते हो. So you can say Java -hyphen version. You can say it in this way, where it will tell you that it's an open JDK that you have downloaded and the version is 11.0.16. And when I have downloaded it, you can check the date. So it's 2022 यानी कि बहुत साल हो गए. So this is the version that I have right now onto my machine. Similarly, whatever the version that you are going to download, whenever you are going to download, उसके details भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. Either you can check it through here or you can go into the control panel. You can check over there. आपको वहाँ पे JDK adaptm JDK का we could say वो software वहाँ पे दिख जाएगा. You can go into the control panel, into the programs, वहाँ पे भी दिख जाएगा. But this is the correct way of looking at it. Not only that, if you look at the VS Code right now, VS Code में भी if you know that we can open up the terminal. हम लोग terminal को open कर सकते हैं. But when you open the terminal, make sure you have opened the command prompt. Do not open the PowerShell. Generally, by default, the one that gets opened is a PowerShell. Make sure to open the command prompt, and into the command prompt, here also you can give the same command. So this is going to be Java -version, which will give you the entire details. यानी कि command prompt आप externally open करो यहाँ से, या फिर आप उसी VS Code के अंदर उसको open करो, doesn't matter. You can use any of it. यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट कहीं से भी आप यूज कर सकते हो. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू वर्क. नाउ इफ यू लुक एट वी कुड से दिस फोल्डर स्ट्रक्चर. अगर आप इस फोल्डर स्ट्रक्चर को चेक करोगे इनटू द VS Code, व्हाई आई एम यूजिंग अ VS Code, अगेन इट्स एन एडिटर. अगेन रिमेंबर, इट्स नॉट एन IDE, इट्स नॉट एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. वो नहीं है. इट्स कम इनसाइड दिस एडिटर. इट कम्स इनसाइड अ कैटेगरी ऑफ एन एडिटर. So because it's an editor, now I'm going to write a particular program over here. मैं एक छोटा सा प्रोग्राम जावा का लिखने वाला हूँ. And it's going to be a hello world program, and I want to understand the steps for compilation and execution. मुझे समझना है कि compilation और execution में होता क्या है in case of Java, and how it is different from the other programming languages. वो बाकी programming languages से थोड़ा सा कैसे अलग है. That means execution का flow कैसे अलग है. That is what we are going to see. So now we are going to write a program, and to write a program, I'm going to create one particular file over here. Okay, please look at this. There is this file that I'm going to create, जिसका नाम मैं रखने वाला हूं because it's a program. I will name it as a program 01. Whatever the name that you want to give, you can say it in this way, program 01. or maybe I want to write a hello world program, तो आप उसका नाम hello, जो नाम देना चाहते हो दे सकते हो. Do not forget to give an extension as .java. Whatever the name that you want to give, you give it. नाम वहां पे दे दो, but do not forget to give an extension as .java. So it is going to be program 01.java hidden there. Now inside this particular Java file, if you want to write any Java program, कोई भी Java program अगर लिखना भी है आपको, you have to compulsory create a class. आपको compulsory एक क्लास यहाँ पे क्रिएट करना ही पड़ेगा. That's a syntax. Understand it. Whenever you talk about syntaxes, so these are a kind of set of rules that you have to follow. आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. Compulsory. So what should be the name of the class? Can I give any name to that class? Yes. आपको जो मर्जी हो, whatever the names that you want to give it for the class, you can give it. But what I'm going to do is, whatever is the name of my file, मेरे फाइल का नाम जो भी मैंने रखा है, I'm going to give the same name. So I'm going to say this is going to be the program 01. You can give any name to the class. Class का नाम कुछ भी हो सकता है. Understand it? Class का नाम कुछ भी हो सकता है. But what is the name of the class that I've kept? I've kept the name of the class same as that of my file name. ऐसा क्यों कर रहा हूँ? There is a purpose behind it. ये purpose आपको आगे पता भी चलेगा. But right now purposefully I'm doing it. This is going to be a class program 01. Now inside this class, there is a entry point method for Java. Just like in your other programming languages, in C and C++, you have an entry point function. Similarly, in Java also, we have an entry point method. Which is that entry point method? So the entry point method is main over here. But look at the syntax that you need to write. Compulsory, I'm saying, compulsory, you have to say public static void main. First, how do you write the main method? Compulsory, you have to say public static void main. Not only this, compulsory, you have to pass
an array of string. You have to pass an array of strings. Look at this. This is compulsory. This syntax is compulsory for Java. For Java to start the program. This is an entry point method, and the entry point method must be given exactly in this way. यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. नो सर, वो मेन वॉइड मेन की जगह पेन पेन नहीं चलेगा. सर पब्लिक हटा दू नहीं चलेगा. स्टैटिक हटा दू नहीं चलेगा. व्हाट इफ आई डू नॉट राइट स्ट्रिंग ARR ऑफ दिस नहीं चलेगा. नॉट अलाउड. Every time whenever you are going to write a main, it has to be in this way. It has to be in this way, compulsory. पर्पस क्या है, वी विल अंडरस्टैंड इट थोड़ा सा आगे जब हम लोग जेवीएम वगैरह थोड़े से बात करेंगे. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, डू नॉट वरी ऑन टू इट, बट अभी तक कंपल्सरी यू हैव टू राइट इट इन दिस वे. नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द हेलो वर्ल्ड ऑन टू द कंसोल. मुझे इस हेलो वर्ल्ड को कंसोल के ऊपर शो करना है. हाउ डू आई शो इट? नाउ टू शो दैट ऑन टू द कंसोल, you have to use one class called as the system class. You have to use one class called as the system class. Inside the system class, there is an object. There is an object called as the out of an print stream class. ये print stream class का एक object है. From this object or using this object, you are going to call the method called as the println. Call as the println. So it is system. System is a class. Out is an object of a print stream, and println is a method of that print stream. And this method is going to be used to print the hello world onto the console. This method is going to be used to print the hello world onto the console. Done. Notice it. जरा notice करो. System क्या है? System is a class. Let me mention it. So when you are writing it in this way, system dot out dot println. So इसमें से what is the system? System is a class. System क्या है? एक class है. Out क्या है? Out, it is an object of an print stream class. वो print stream class का एक object है. And this particular println, what this println is? It is nothing but it is the method. It is the method of the print stream class. It is the method of the print stream class. Understand it? How we are writing the syntax? So system एक class है. Class के अंदर out नाम का एक print stream का object है. It is nothing but an object of a print stream class. और उस object को use करके I am calling this method called as the println. ऐसे ही क्यों लिखा? Again, it's a syntax. Generally, this out, the object is created as a static object. So that's why we have to call it using the dot operator. And this is a method, non-static method. That's why it has to be called onto the object. अब जिनको static object सारे पता है उनके लिए ठीक है. जिनको नहीं पता है, understand it. ऐसे ही लिखना पड़ेगा. This is the way that you have to write it at first. So system.out.println hello world. So this is my first Java program that I have created, which is my hello world program, which I want to execute it. जिसको मुझे करना है execute. Now, how do I execute this program? I do not say just click on this run button. No. There is a step that needs to be included, which we have to follow because this is an editor. क्योंकि ये अब एक editor है. How do you run it? Go on to the terminal. That means open the command prompt, and into the command prompt you are going to give those commands. What is the X over there? X कुछ भी नहीं है. Look at this. अगर मैं यहाँ से back भी करूँगा, can you see that the bracket is gone? So the X over here is nothing but the name of an argument that they have given, the name of the parameter that they have given into their documentation. आप यहाँ पे documentation को notice करो. println. What is this? String X. ये क्या है? Parameter है. तो ये parameter का नाम है. वो बता रहा है कि इस पैरामीटर का नाम x है जिसकी वैल्यू आपने ये देके रखा है. सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम टाइपिंग. ये मैंने कुछ टाइप नहीं किया यहाँ पे. देयर इज नथिंग दैट आई हैव टाइप्ड. इट इज द इंफॉर्मेशन दैट इट हैज अटैच्ड. इट इज द VS Code who is attaching the information to me. Fine. Nice question. So here you can look at this, how I'm going to compile it. To compile this particular code, first of all say Java C. Java C in the sense you are saying I want to use the Java's compiler to compile this code. I'm going to use the Java's compiler to compile this code, Java C. Now, which particular code do you want to compile? So this is the program 01.java file. Notice it. What's the name of my file? It is the program 01.java. What you are trying to do? You are trying to compile this file.
Hit enter. Check this out. Something has happened. Something has happened. If you observe onto the left hand side, are you able to see one more file that has been created? Hey, what's the name of the file? What's the name of the file? जरा notice करो. Notice it. What's the name of the file? फाइल का नाम क्या है? प्रोग्राम 01. अरे पहले भी तो था प्रोग्राम 01. But what's the extension to it? The extension is a dot class. Extension is dot class. So every Java program that you compile, is going to create a dot class file. अब ये डॉट क्लास कब क्रिएट होता है, वी विल टॉक अबाउट इट. बट एवरी प्रोग्राम दैट यू आर गोइंग टू कंपाइल, जब जब आप जावा का प्रोग्राम कंपाइल करोगे, every time you are going to compile, it is going to create a dot class file. Now what this dot class file is, so this dot class file is an intermediate file. What this dot class file is, this dot class file is an intermediate file that holds the intermediate code, also called as the bytecode. What that dot class file is, let me mention it. Whenever you are going to compile a particular code, when the Java code is compiled, it creates a dot class file. Dot class file contains the bytecode. What is the bytecode? Bytecode is an intermediate code generated by the Java compiler that is understandable only by the JVM, which is understandable only by the JVM. Hey, who can understand it? Only the JVM can understand this bytecode. No other thing. यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है. Who understands that? Only the JVM understands it. What is the JVM? It's nothing but the Java virtual machine. Let me execute it. Execute करके दिखा. Whenever you want to execute, you just have to use a tool called as a Java. See, there are these two tools that we are using. ये जो tools है, who is giving me the tools? The JDK is giving me the tools. Which two tools you are using? The first tool that you are using is nothing but the Java C tool, which is nothing but the Java compiler, and the second tool that you are using is the Java. First tool is nothing but the Java compiler. It is the Java compiler, and this tool is the tool to execute the program. So executor, you can say this is nothing but the executor. So Java compiler is going to be used to compile the Java code, and this Java is going to use to execute that particular code. Which code? The compiled code. Notice it. How do I execute it? Say Java and give the name of your dot class file. आपके dot class file का नाम क्या है? It is still program 01. यानी कि whatever we could say the class that you have created, on the same name a dot class file generally gets created, and whatever is the name of a dot class file, आप उस dot class file का नाम यहाँ पे देते. So it's going to be Java program. That's it. Hit enter and you are able to see the hello world. Your program has executed. This is the way, first of all, you execute a program. How do you execute a program? You say Java C to compile it, and whatever the compiled code is, whatever the dot class file is, so you execute that particular dot class. And here it says hello world. First, is the compilation and the execution step clear? Let me mention it. A compilation step, Java C, that's going to be the program 01.java, and to execute it, you are going to say Java, that's going to be program 01. Whenever you are going to compile, जब भी आप compile करोगे, so after compilation, it creates a file called as the program 01.class file. What it creates? It creates a file called as the program 01.class file, and this dot class file you have to use it over here. So I can say it is nothing but the Java and the name of dot class file. It is nothing but the Java and the name of dot class file. I can say it in this way. यानी कि आपको पता चले कि what we have used the name of a dot class file. Hey, let me know, is the compilation and the execution step clear to you first? Is the compilation and execution step clear to you? Very good. Now understand it in this way.
मैं आपको कुछ वेरिएशंस भी दिखाने वाला हूँ आगे, मेन व्हाई इट हैज टू बी रिटन इन दिस वे, लेकिन मैं आगे बताऊंगा. बट लेट अस लुक एट दिस, व्हाट हैपेंस इन दिस केस. whenever you are going to write one particular java code, जब जब आप कोई भी जावा का कोड लिखोगे, let's say this is the file that we have, we will call it as, we could say, my file one.java. This is my particular file, or maybe I can say this is nothing but the program.java. It is nothing but the program.java file. Now inside this program, let us say you have one particular class. आपने class create किया. What's the name of a class? The name of the class is going to be program. तो फाइल का नाम क्या है? प्रोग्राम. क्लास का नाम क्या है? प्रोग्राम. The name of the file and name of the particular class is the same. Now whenever you are going to compile this code, जब जब आप इस फाइल को compile करोगे, whatever the Java file that you have, whenever you are going to compile it, it is going to create a dot class file for it. Whenever it is going to be compiled, जब जब ये compile होगा, so after the compilation, what it is going to create? It is going to create a dot class file. Okay, what this is? This is a dot class file. I can say this is a dot class file. What's the name of the dot class file? The name of the dot class file is nothing but the program dot class. What it is? It is nothing but the program dot class. ये class program क्या है? This is our actual class that we have written. ये क्या है? This is our actual class that we have written. And what is the next one after the compilation that is happening? Compilation के बाद क्या हुआ? What is the thing that is happening after compilation? तो उसने program dot class करके एक फाइल बनाई. Now whatever this file is, where do you execute this file? आप उसको execute करोगे कहाँ पे? Are you going to execute directly on top of OS? क्या आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करोगे? आंसर इज नो. आंसर इज नो. You are not going to execute on top of OS. Rather, you are going to execute it on top of JVM. Where you are going to execute it? On top of JVM. What is JVM? It is nothing but Java virtual machine. What it is? It is nothing but the Java virtual machine onto which you are going to execute it first. This is where you are going to execute the code. And this Java virtual machine is going to execute this on top of OS. ये कहां पे execute करेगा? So this is going to execute on top of OS. So this is nothing but your operating system. This is nothing but your operating system. So operating system can be anything. Operating system कुछ भी हो सकता है. So the operating system can be. Now look at that. The operating system can be. It can be the Windows. It can be the Linux. It can be, we could say, the Mac OS. Whatever the operating system that you have. But for those operating system, you need a JVM. आपके पास वो JVM होना चाहिए. Now on top of this JVM, what you execute is your Java code. आप उसके ऊपर क्या एग्जीक्यूट करोगे? आप उसके ऊपर आपका जावा का कोड एग्जीक्यूट करोगे. First of all, let me know, is this flow clear to you? How it is getting executed? This is the program.java file, gets compiled into the dot class file. Where do you execute it? On top of JVM. Are you executing it directly onto the OS? No. आप OS के ऊपर उसको execute नहीं करोगे. Where you are executing? On top of JVM. Let me know first. Is this clear? Or is this flow clear? कि कैसे कहाँ पे execute हो रहा है? First, is this step clear? Very good. Understand it. You are executing on top of JVM. Now let me tell you why. ये बीच में JVM क्यों आया? Understand it. Java is architecture neutral. The Java code, when you talk about, it is architecture neutral. That means Java itself says that I am portable. Portable, architecture neutral. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है that once you have created a Java code and compiled it into the .class file, now such particular Java code can be executed on any operating system. Doesn't matter it is Windows, it is Linux, or it is Mac OS. फर्क नहीं पड़ता है. Once you have compiled that particular code, that code can be executed on any operating system. Imagine your C and C++ code. अब आपके C और C++ कोड को थोड़ा सा इमेजिन करो. Suppose you have a .c file and you have a .cpp file. आपके पास दो फाइल्स है. You have a .c file, you have a .cpp file, and both these particular files I want to execute on Windows, on Linux, and on Mac OS. Let's say there are these three operating systems that I have. मेरे पास ये तीन operating systems है. तो बताओ क्या करना पड़ेगा?
Maybe I can say this is going to be the Linux, Windows and Mac OS. इन तीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आई वांट टू एग्जीक्यूट इट. हाउ डू आई एग्जीक्यूट इट? How do I execute it onto the Windows? How do I execute it onto the Linux? And how do I execute it onto the Mac OS? इन तीनों के ऊपर मैं एग्जीक्यूट करूं कैसे? What I have to do? मुझे क्या करना पड़ेगा? Fast. Tell me. Can I say for this particular C, every time I have to do the compilation? Every time I have to do the compilation. यानी कि सबसे पहले क्या होगा? Compile किया जाएगा. It is going to be compiled. After the compilation, specifically किसके लिए? Windows के लिए compile करना पड़ेगा. When it has been compiled for the Windows, it is going to create a .executable file. When it is going to be compiled for, we could say, Linux or Mac OS, it is going to be creating .out file. वो यहाँ पे .out file create करेंगे. Now whatever this .exe and .out files are there, now these needs to be executed onto the Windows or onto the Linux and Mac OS. This is what you are going to do. Can I say the same thing I have to do it, exact same thing that I have to do it even for CPP? यानी कि अगर .cpp का भी फाइल होगा, ये what I have to do? उसका एक तो .exe बनेगा, .out बनेगा. Whatever the exe that is going to be created, the exe will be executed onto the Windows, or .out जो भी होगा, it will be executed onto the Mac OS. Do you agree with this? Every time what I have to do, for every operating system I have to do the compilation. For every operating system I have to do the compilation. जितने भी different operating systems होंगे, you have to do the compilation. Do you agree with this? Do you agree with this? Yes. But look at this Java code. Look at this Java code. Whenever you compile the Java code, what do you have? A .class file. Now, once you have the .class file, the same .class file can be executed. Look at that. Can be executed onto this JVM. Onto this JVM. What this is? This is the JVM. Let me just make it a bit shorter. That's the JVM. That's the JVM. And this JVM executes. This JVM executes on top of operating system. Now the operating system that you have, can be the Windows operating system. The operating system that you have can be the Linux operating system, and the operating system that you have can be the Mac OS operating system. Look at that. आपके हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, whether it is Windows, whether it is Linux, or whether it is Mac OS, whichever machine that you have, can I say for this machine you are already downloading that particular JDK? यानी कि जो आपने adaptive JDK यहाँ पे नोटिस किया था, can I say for your machine, आपका मशीन जो कुछ भी होगा, based on that you are downloading that particular JDK. यानी कि आपके मशीन के ऊपर for your operating system you already have the Java virtual machine. You already have what? The Java virtual machine. So once you have the Java virtual machine, that means now whatever the .class file that will be given to you, जो भी .class file आपको दी जाएगी, do you need to compile it for your OS था? यहाँ पे अगर मैं Windows को दूंगा, Windows has to compile it to get an executable file. अगर मैं .c दूंगा तो, if I give it to the Linux, Linux has to compile it to get the .out file. If I go for the Mac OS has to do the compilation. अरे हर एक को compilation करना पड़ेगा. And after doing the compilation, they have to execute it. उनको यहाँ पे execute करना पड़ेगा. Windows is going to say it in this way. Windows कहेगा यहाँ पे a.exe. Maybe the Linux is going to say this is going to be a.out, and even the Mac OS is going to say a.out. And again, this is the command that they have to give. But for this particular Java code, once a .class file is created, एक बार अगर .class file create होती है, so this .class file need not to be compiled further. उसको compile नहीं करना है. Directly you execute it on top of this JVMs. आप क्या करो? Directly you execute it on top of JVM. आपके पास जो भी JVM होगा, whichever JVM that you have, that means whether the JVM that you have downloaded for the Windows, Linux or Mac OS, फर्क नहीं पड़ेगा. You just deploy it or you just execute it. This is why Java is considered as portable. Java is considered as architecture neutral. Java is called as portable. Java is called as architecture neutral. The reason is once the Java code is created and compiled, it just needs to be executed. आप उसको जिस भी particular machine के ऊपर जाओ, जिस भी particular architecture के ऊपर जाओ, जिस भी particular we could say operating system के ऊपर जाओ, you can execute it directly without any further compilation. That's why Java is called as a portable.
Let me know, is first the execution of Java clear to you? Is it clear why Java is called as a portable or Java is called as architecture neutral? Is it clear? Or is it clear, guys? Are you there? Go through the entire flow, understand it. So in the case of earlier code, every time अब imagine करो आपका डॉट सी का कोड अगर विंडोज पे रन करना है, क्या करना पड़ेगा? डॉट सी हैज टू बी कंपाइल्ड, आपको जीसीसी डॉट सी वट एवर द नेम ऑफ हेलो डॉट सी कंपाइल करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू एग्जीक्यूट. अगर लेट्स से वही सी का कोड अगर मुझे लिनक्स पे चाहिए तो वंस अगेन यू हैव टू डू द कंपाइलेशन, एंड एज यू नो कंपाइलेशन विल टेक टाइम. जितना बड़ा कोड होगा उतना टाइम लेगा कंपाइलेशन में. So once again, if you go on to the Linux, again you have to do the compilation. If you go on to the Mac, again you have to do the compilation. यानी कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको मल्टीपल टाइम्स कंपाइल करना पड़ेगा, बिकॉज दीज code, or we could say CCPP, whatever the compiled code is, get directly executed on top of operating system. But for the Java, this is not the case. On top of OS, there is a Java virtual machine which has been created. और ये क्रिएट ही इसलिए किया गया है ताकि जावा का कोड पोर्टेबल बन सके. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से द जेवीएम हैज बीन क्रिएटेड एंड द जेवीएम इज सिटिंग राइट ऑन टॉप ऑफ दिस ओएस. सो अगर आपके पास कंपाइल्ड फॉर्म में जावा का कोड आता है, इफ यू गेट अ डॉट क्लास फाइल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जावा सोर्स कोड, सो दैट डॉट क्लास फाइल यू कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली ऑन टू द जेवीएम, क्योंकि जावा वर्चुअल मशीन को पता है व्हाट्स देयर इनटू द डॉट क्लास फाइल, उसको पता है हाउ टू रीड द बाइट कोड्स. जस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बाइट कोड्स it will convert it back to the OS level instructions depending on which OS is kept below it. अगर Windows होगा तो वो Windows के instruction set में convert करेगा. If it's Linux, it will convert it to Linux. If it's Mac OS, it will convert it to the Mac OS. And with respect to with whatever the instruction set it requires on top of which it has been sitting, it will convert it to the machine understandable code. This is what the JVM does. And because of this JVM, because of this architecture, the Java is considered as the portable. There is also a term that is used for the Java. The term that is used is called as the Vora. जिसे कहा जाता है write once, run anywhere. What does the Java generally follows? Java follows this term called as the Vora. What is Vora? It says write once, यानी कि कोड एक ही बार लिखो and then run anywhere. It is called as write once, run anywhere. Here it is write once, compile again, and run anywhere. So not run anywhere, run on that particular platform. But here you just write it once, compile it, and that's done. Now you can run it on any damn machine. उस मशीन का आर्किटेक्चर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता. You can run it on any platform. Let me know, is the execution flow clear to you? How the Java works? Is it clear first? Yes, others? Very good. Very good. Fine. Now let's go ahead and let's talk about what happens when I change the name over here. अब जरा चेक करते हैं कि क्या होता है यहाँ पे अगर मैं नेम्स को चेंज करता हूँ. जस्ट एक एग्जांपल एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस. यानी कि जो स्ट्रक्चर अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, द एडिटर दैट आई एम यूजिंग, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस एडिटर, तो ये भी मैं बताऊँ. बट फर्स्ट लेट अस लुक एट दिस. So this was our program 01.class. Let me create one more. We could say a file. I will call it as a program 02.java. That's my second program. Look at that. This is going to be the class program 02. अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, now the editor, the one that I'm using, the VS Code that I'm using, उसके अंदर by default कुछ IntelliSense भी है, and by default it tries to create the same class as that of my file. आपने यहाँ पे नोटिस भी किया होगा, I didn't wrote this particular class, लेकिन automatically create हुआ. Now what I'm going to do is, this is the file that I have, this is the program 02 file that I have, and inside this file, I'm going to create a class called as a one. Look at the name of my class. Class का नाम है one. नाम कुछ भी दे सकते हो. This is my class. And inside this class, I'm going to say, there is going to be the main method. There is going to be the main method, which is going to have system.out.println, which says inside one class, where it is going to say inside one class. यानी कि आपके पहले क्लास के अंदर का मेन मेथड है. Now whatever this particular program has been created, I want to compile it. मुझे करना है इसको compile, and after the compilation I just want to execute it. मुझे उसको execute भी करना है. Look at this. Compile this Java code. This is going to be Java C. This is going to be Java C. And say this is my program 02. Program
02.java. 02.java. Now remember, every time you compile, whenever you are going to do the compilation, make sure make sure that you use the name of the .java file. You use the name of the .java file. ये program 01.java compulsory .java file यानी कि whatever the name that you are given उसी का नाम यहाँ पे होना चाहिए. Notice it now. Very important thing है. जरा स्ट्रक्चर वापस से चेक करो. What is there inside this directory? Inside this day1. मेरे पास मेरी हेल्प फाइल है. Leave it. Look at this program 01.java and .class file. ये program 01 java फाइल है. ये इसका compiled फाइल है. Similarly program 02 java फाइल है and I want its compiled file. मुझे इसकी .class फाइल चाहिए. And to get that .class file, I'm going to compile this code. Now hit enter. जरा enter चेक करो और यहाँ पे चेक करो what is the name of the file. Hit enter. The program has been compiled. Whatever the compilation that is done, if where is the program 02.class? Program 02.class file किधर है? Notice it. There is a different .class file जिसका नाम क्या है? Can you observe? What's the name of it? One.class. Can you observe what's the name? It is one.class. That means inside this .java file, whatever the name of the class that you write, the .class file is going to have the same name. यानी कि .class file का नाम कहाँ से चूज किया जाता है? Is it on the basis of the file name? No. It depends on what is the name of the class that you have given inside that particular file. उस क्लास के अंदर उस फाइल के अंदर जो भी क्लास आप क्रिएट करोगे, whatever is the name of the class, depending on that name, the .class file will be created. Let me know. Is it clear why in the earlier case I was keeping the same name? ये मैंने यहाँ पे name same रखा था. Have you understood why I'm keeping the name same? Because if the names are different, can you observe? यहाँ पे फाइल का नाम program 02 है, लेकिन .class फाइल का नाम अब one.class बन चुका है. Can you notice it? Have you seen it? Is it clear what's the name of the .class file? आ रहा हूँ मीनल उसी के ऊपर. I will be coming to it. What happens in this case? But is the first case clear to you? Very good. Now tell me how to execute it. उसका execution कैसे करूँ मैं? How do I execute it? How do I execute it? How do I execute that particular .class file? How do I execute that .class file? Very good. Very good. This is going to be Java. And which name do I have to give? यहाँ पे नाम किसका होना चाहिए? Is it the .java file or is it the .class file name? Is it the .java file or is it the .class file name? Very good. It's the name of the .class file. चलो समझ गए. So what is the name of the .class file now? So it is going to be one.class. It is going to be one.class. But whenever you are going to execute it, .class यहाँ पे देना. So it is not required. Syntactically, it is not required. So you just have to say Java1, hit enter. Is it saying inside my one class? Yes. This is the way you have to execute it. So every time you compile the Java code, it creates a .class file. And this .class file is created by looking at the class name that you have used within that program. Looking at the class name that you have created inside that .java. Now the question comes down, sir, what if there is one more class over here whose name is class 2? Hey, what will happen if there is one more class called as a class 2? And this is going to say inside 2 class or inside second class. And notice it. क्या मैं एक जावा फाइल में मल्टीपल क्लासेस दे सकता हूं? Yes, I can. Into their individual classes, can I have the main method? Yes, ये भी चलेगा. Look at that, how the Java works. This is the way the Java is having the syntaxes or the Java is having these rules. एक ही Java फाइल में आपको जितने चाहे उतने क्लासेस आप बना सकते हो. Whatever the number of classes that you want, you can just mention it. Second, in every class you can have a main method. हर एक क्लास में चाहे तो आप मेन मेथड दे सकते हो. There's no problem into it. So there are these 2 classes right now. There is class 1, there is this class 2. In both the classes we have this main. एक के अंदर main है which says inside one class, दूसरे के अंदर main है inside 2 class. Now the question comes, if I compile this code, अगर मैं अब इसको compile करता हूं, what will be the name of the .class file? What will be the name of the .class file? Option: is it the name going to be program 02.class? Is it the name going to be one.class? Is it the name going to be 2.class?
or there are going to be two files created, one dot class and two dot class. What do you think? आपका दिमाग क्या कहता है? फाइल का नाम क्या होगा? प्रोग्राम जीरो टू डॉट क्लास होगा, वन डॉट क्लास होगा, टू डॉट क्लास होगा, कि दो फाइल्स डॉट क्लास बनेंगी? टू फाइल्स, मे बी टू फाइल्स, बॉटम अप अप्रोच, ओके. अच्छा, नाम होगा टू डॉट क्लास, ओके. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, now look at this. Whenever I'm going to say java c program 02.java, look at that, I will delete this one dot class. इसको मैं करता हूं delete. ठीक है, let me delete it. one dot class को करते हैं delete. So delete, 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 delete. Now look at that, there is no any dot class file right now. यहाँ पे कोई भी dot class file नहीं है. So there is only, we could say program one dot class, program one dot java, and program two dot java. Let us compile this file. When I'm going to compile it, program 02.java, hit enter. Can you look at that? There is this one dot class and there is this two dot class. How many files are been created? There are these two files are been created. That means what does the Java does? Whenever you compile the Java code, it will create the dot class file depending on the number of classes that you have defined inside it. Okay, what the Java is going to do? Java is going to create those many number of dot class file as per the number of classes that you have defined inside that particular file. First of all, remember it. Note it down somewhere. Very important. Very important. So whenever Java code is compiled, when we compile the Java code, it will create as many number of classes as defined inside that Java file. Whenever we compile the Java code, यानी कि जो भी आप जावा कोड कंपाइल करोगे वो उतने ही डॉट क्लास फाइल्स को क्रिएट करेगा जितने क्लासेस आपने उस फाइल के अंदर बना के रखे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट क्लियर? First of all, is it clear how the Java works? And is it clear how the Java works? Then the question comes, how do I execute it? अब बताओ execute कैसे करो? Now you have the option. अब आपके पास option है. Which particular class do you want to execute? Is it one or is it two? If you want to execute the first class, you just have to say this is Java and this is one. You just have to say this is Java and this is one. If you want to execute the second class, you just have to say Java and this is going to be two. It says inside one class, inside two class. Now you have the option. You can choose it. Let me know. Is it clear so far? Let me know. Is it clear so far? How many classes? Or we could say when the question is going to ask, when the interviewer is going to ask you the question, when it says how many dot class files will be created, so you have to say जितने भी classes defined है, as many number of classes are defined, those many dot class files will be created whenever you compile the Java code. Any questions so far? Yes, have you got this thing? Are any questions? Are you there, guys? At least give some responses so that I know. Okay, so any questions? Fine. Sure, let's go ahead now. So you can notice it like as I have started developing these applications, आप यहाँ पे देख सकते हो कि like एक ही जगह पे सारा कचरा हो रहा है. So you can see like one dot class, this is program two dot java, two dot class, फिर program one dot java. Can you see that everywhere I can say the dot class dot java files are scattered over here. Now this is not the correct way of developing the Java code or the Java applications. So there is a proper structure, there is a standard way how generally the Java development has to be done. So first of all, if you want to develop this entire code, it has to be like a folder structure, a proper folder structure that should exist. And what that folder structure is, how to create it, now we are going to see this. और कुछ commands भी हमको यहाँ पे आप थोड़े से check करने. If you want, you can try it out today. चाहो तो कर सकते हो. Otherwise, I would literally recommend you go with the IDs.
डायरेक्टली जो आईडी का एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूँ, यू कैन डायरेक्टली गो विद इट, दैट्स फाइन। दोनों क्लासेस क्यों नहीं कर सकते? सी, whenever you execute a code there should be only one entry point function, Ankita. So this is not meant for again we could say Java को generally run करने के लिए, parallelly execute करने के लिए your operating system or JVM cannot work on it. It has to be two threads that you have to create it individually, because when you execute a Java code, Java executes into a thread called as a main thread, and there is one more thread called as a garbage collection thread. तो ऐसे अगर लेट्स से सेकंड एप्लीकेशन भी रन होगा, उसके भी दो अलग से बनेंगे, यानी कि जेवीएम का अनदर इंस्टेंस वंस अगेन रन होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ ओएस। दैट्स व्हाई दिस एग्जीक्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए वो एग्जीक्यूशन ऐसे पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज का। इवन इट्स नॉट ओनली अबाउट जावा, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल विद वी कुड से द सीएनसीपी पे एज वेल, कि मेरे पास दो a.exes है, why cannot I run both the exe files? एक हो सकता है a.exe हो, एक b.exe हो, I cannot run both the files at the same time। रीजन वही है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्टली आप ऐसे दो एग्जीक्यूशंस एक ही प्रोसेस में नहीं कर सकते हो। इट हैज टू बी टू थ्रेड्स दैट यू हैव टू क्रिएट, फिर उसके अंदर रन करो, देन दैट्स फाइन। तो उसको पैरेलल एग्जीक्यूशन यानी कि मल्टीटास्किंग कहा जाता है, दैट यू हैव टू डू इट, क्योंकि वो जावा के बाहर रन हो रहा है। अंडरस्टैंड इट, ये मैं टर्मिनल के ऊपर रन कर रहा हूँ, दिस इज नॉट विद इन जावा, दिस इज ऑन टर्मिनल। सो ऑन टर्मिनल आई हैव टू क्रिएट टू थ्रेड्स, पहले थ्रेड के अंदर वन एग्जीक्यूट करो, दूसरे थ्रेड के अंदर टू एग्जीक्यूट करो, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। फाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंसेप्ट्स। चलो, so let us talk about, we could say, now creating a project structure and see how the project structure is going to be. Now when you are going to work with the Java, first of all, every Java project should have one directory. Every Java project should have one directory. So let us name this directory as our demo1. So that's my directory, ये मेरा directory है, so this is a directory that you have to create. Inside this directory there should be this two directories that you need to create. इसके अंदर दो और डायरेक्टरीज आपको क्रिएट करने हैं। दिस इज माय डायरेक्टरी, दिस इज माय डायरेक्टरी। द फर्स्ट डायरेक्टरी दैट नीड्स टू बी कॉल्ड एज एसआरसी एंड द सेकंड वन नीड्स टू बी कॉल्ड एज द बिन डायरेक्टरी। सो यहाँ पे दो डायरेक्टरीज बनेंगे विद इन दिस डेमो01। सी द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, व्हाट वी आर लुकिंग एट इज नथिंग बट अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इन जावा। हाउ टू हैव अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर? आई कैन से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर in Java. This is the way you should have a project structure in Java. So I can say there is going to be this demo01, and inside this demo01 there are these two directories, one is src, another is bin. Inside this src you are going to have all the .java files, यानी कि whatever the program 01.java file that you have created, whatever the program 02.java file that you have created, वो सभी .java files एक कहाँ पे होने चाहिए? So that has to be inside this src. Everything has to be inside this src. Maybe I can say program 01, this is going to be program 02, यहाँ पे होनी चाहिए। Whatever the dot class files that are being created, जितने भी dot class files बने, कौन कौन से बने? Maybe I could say that was going to be program 01 dot class. Maybe I'm going to say this is going to be one dot class. ये जितने भी dot class files बने, all those dot class files has to be kept inside this bin. ये इस bin के अंदर होने चाहिए। This is the way the project structure should look like. ऐसे सारा चीज randomly एक ही फोल्डर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए. This should not be the case. Everything should be properly organized. This is a standard way of creating the Java projects in industry. Even industry में भी ये एक standard तरीका है how you have to create those projects. So you can observe inside this src all the Java files will be kept. Inside this bin all the .class files are going to be kept. So let us create this project structure and let us understand how this entire thing can be created now. ये कैसे create होता है and what are going to be the steps, what are going to be the compilation and execution steps for it. So to do it, once again I'm going to go inside the same VS Code and here I'm going to create a directory now. So create a directory, we will call it as the demo01. Okay, can you see that? What's our directory? The directory is going to be demo01. Inside this demo01, there are going to be these two directories. One is going to be the src and another one is going to be the bin. Okay, notice it. आप यहाँ पे notice कर पाओगे. Inside this demo01, there are these two directories. One is the bin directory, another is the source directory. Inside this source directory, I'm going to create one particular Java file. We will call it as program01.java. Look at the extension once again. This is going to be program01.java. Whatever it is giving me VS Code, I'm going to remove it. Simple सा मेरे पास एक class है.
and the class is called as the program01. बन गया. Now inside this class, I'm going to have a main, a simple main. The main compulsory has to be written in this way: public static void main. Compulsory, I'm saying compulsory. And inside this particular main, you can just write down by saying system.out.println. Say that's going to be my hello world, or we could say hello from program01, ताकि थोड़ा सा आपको चेंज दिखे, so that you are able to understand it which particular code is getting executed. Once again, look at the entire structure. There are directory structures को notice करो. We have this demo01 inside which there are these two directories. One is bin, another is src. Inside this src, we are creating this file called as the program01.java, and this program01.java is going to be executed by keeping its .class file inside this bin. यानी कि where do I need to keep its .class file? It has to be kept inside this bin, and then it has to be executed. So let us start compiling it. Let us start executing it. Now, whenever we are going to do the compilation, look at that where I am right now. So inside this src, ये program 01 किधर है? So this is kept inside this src. If it is kept inside this src, that means I have to go inside this directory, inside this demo01, inside that src, and then I have to compile it. Notice करो where I am right now. I am onto this day01. Day01 पे वो फाइल ही नहीं है. Where it is? Go inside this directory called as the demo01. Inside that demo01, there is a directory called as a src. And notice it. Am I into the src directory? Yes. Now, inside this src directory, give the commands. Can you tell me what is the command for compilation? What is the command for compilation? Chalo fast. Give me the command for compilation. Fast. Very good. एक नहीं दिया. So it's Java C. Java C. That's going to be program01.java. But what is our requirement? What's our requirement? Our requirement is इसका dot class file कहाँ पे बनना चाहिए? If where the dot class file has to be created. If where the dot class file has to be created. Can I say it has to be created inside this bin? It has to be created inside this bin. If I compile this code like this, if I say Java C program01.java and hit enter, compilation तो हुआ, but where the dot class file is created? वो dot class file कहाँ पे बना? Is it getting created inside the bin or inside the src? वो src में ही बना, यानी कि ये तो प्रॉब्लम हो गया. रिक्वायरमेंट इज सारे डॉट क्लास फाइल्स कहां पे चलनी चाहिए? बिन में. क्यों? दैट्स एन इंडस्ट्री प्रैक्टिस. दैट्स एन इंडस्ट्री प्रैक्टिस. हाउ डू वी डू इट? इसको करें कैसे? सो टू डू इट you have to say, look at that, let me delete that particular program dot class. उसको मैं डिलीट करता हूं. प्लीज ऑब्जर्व वंस अगेन, src के अंदर सिर्फ जावा फाइल है. देयर इज नो एनी डॉट क्लास फाइल. To compile it, I'm going to say Java C hyphen D. Java C hyphen D. Hyphen D stands for the directory. The directory into which the dot class files has to be kept. Understand it once again. What I'm saying, initially I was saying Java C program01. That means it was saying that whatever the file that you have, compile it and keep inside the same directory. उसी directory के अंदर रखो. But now I'm saying that you compile this Java code, you compile it, and you choose a proper directory. You choose a proper directory. Which directory do you want? So mention it. The directory that I want is not the src. अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, if you keep it as a dot slash, that means you are saying keep it into the same directory. No. Where do I want to keep it? I want to go to the previous directory. I want to go to the previous directory. Previous in the sense parent directory. Which is the parent directory? It's the demo01. It's the demo01. And within this parent directory, we have a directory called as a bin directory. You notice the folder structure. थोड़ा सा operating system के concepts है, but this is how you have to deal with it. This is how you have to deal with it. आपके पास option नहीं है. This is the standard way and industry way of dividing the code, keeping the files separated, keeping all the .java files in src, keeping all the .class files into the bin. अगर ये नहीं करोगे तो आप इंडस्ट्री से बाहर जाओगे. This is a standard practice. You have to follow. You have to follow. You have to keep the .java files in src. Now you are into the src. अब src के अंदर हो, so आप कह रहे हो कि compile that particular code, but use this directory. Which directory? This bin directory to keep what? To keep the .class file generated after the compilation. Which file do you want to compile? The file that is nothing but the program01.java. यानी कि अब मैं कह रहा हूं कि -d.bin will take the .class file, the compiled .class file, and will store it inside the bin directory. Notice it. पहले notice करो.
So if you look at the bin right now, there is nothing into the bin. उसके अंदर कुछ भी नहीं है. The moment I'm going to hit enter, enter hit करो, something has been done, and what has been done is your program 01.java is present in src and the dot class files are kept into the bin. Hey, can you see that? Look at that. Can I say now the program looks really nice as compared to the one कि जो कचरा यहाँ पे फैला हुआ है? Can I say now this looks pretty good? This looks pretty professional now. थोड़ा सा professional भी दिख रहा है. So like every .java file is present over here, .class file is present over here. किसी ने अगर मांगा आपसे compiled files, directly bin को उठाओ और दे दो. You don't have to search for it. आपको search करने की जरूरत नहीं है. Let me know. Is this compilation step clear to you? Or is this compilation step clear to you? This is how you are going to compile it. Let me copy it. Let me go to the, we could say the project structure in Java, and let me say it over here. First, go inside, open terminal from the src directory. आप terminal open करो from the src directory. Second, for compilation and storing the dot class file in bin, use below command. So use the below command. What is the command? So the command is going to be, use the below command. The command is going to be javac -d // bin program 01.java. This is what you are going to do. Just need to deploy. See, this is not required if you go for an IDE. So this is for those who wish to do it from the editors. तो ये उन लोगों के लिए है जिनको एडिटर्स के साथ काम करना है, कि जिनको एडिटर्स चाहिए कि आई वांट टू वर्क बाय राइटिंग द कोड इनटू द नोटपैड, आई वांट टू राइट द कोड बाय डूइंग इट इनटू द VS कोड. क्योंकि ये एडिटर्स कभी भी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं. दे ओनली सपोर्ट द लैंग्वेजेस. वो सिर्फ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं. ये पूरे इन्वायरमेंट को बनाने का काम, प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने का काम, ये आईडीज का काम होता है. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि एडिटर्स के पास बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है, बट आईडीज आर ओवरकमिंग दोस लिमिटेशंस. दैट्स व्हाई वी विल स्टिक टू द आईडी. लेकिन एक एग्जांपल के लिए आई एम शोइंग इट टू यू हाउ इट कैन बी डन विद द एडिटर्स. एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट. मैं भी ये यूज नहीं करने वाला हूं आगे. दिस इज जस्ट फॉर टुडे, आज के लिए बस. फाइन. So look at that. Now the code has been compiled. Now the time is for execution. Can you help me with the step? How do I execute it? How do I execute it? How do I execute it? Execution का बताओ ना जल्दी fast. So to execute, we have to say Java. And what is the name that I want to give over here? नाम क्या रखूं? 1, 2, program 01. क्या नाम रखूं? So it's going to be Java program 01. You notice it now. I'm going to say that's going to be Java program 01. Hit enter and please look at that. Everyone, please observe. सारे लोग जरा चेक करो यहाँ पे. Hit enter. What it says? What it says? It says could not find or load the main class program 01. Not only that, it is giving you an exception called as class not found exception. There is a bigger problem. The problem is like you have you have compiled this particular code, but while executing, आपके इस command prompt को ही नहीं पता where the dot class file is. It doesn't know where the dot class file is. So is it like for compilation, you are going to come down to src, compile it over here, then go back to the bin, then you execute it? क्या हम लोग यही करते बैठेंगे? So if you do it this much, तो कोड कब लिखेंगे? कंसेप्ट कब सीखेंगे? When you are going to write a bigger code, यानी कि अगर हमारा टाइम, if our entire time is going to go only in the part of compilation and execution, अरे how it is going to work then? ये काम होगा कैसे? Are you understanding it? How it is going to help us? Now to work with it, there is a way that the Java has provided to use a variable called as a class path. There is a variable that you need to use. It is called as a class path. Understand it? Class path. It's called as a class path. Generally, there is a variable that you might know, जिसे कहा जाता है path. If you know what is a path, आपको पता है ऐसा variable होता है path नाम का. It is an operating system variable. Path is a operating system variable, and this class path is a Java's variable. This is a variable given by the JVM.
ये जावा वर्चुअल मशीन के लिए ये वेरिएबल यूज किया जाता है, दैट इज द क्लास पाथ. So it is an operating system variable. It is an Java, or we could say the Java's virtual machine variable. It is a variable that has been used for this JVM, or we could say for the Java virtual machine. Now, what is the difference between these two? इन दोनों के बीच में difference क्या है? So this path is generally a variable that holds the path for all of your softwares. अगर आप आपके environment variables को open करोगे, system के environment variables को open करोगे, so there you find out this variable called as a path. You look at that. ये वो path नाम का variable है. It's an operating system variable. अगर मैं इसको edit करता हूँ, see these are the paths that it has been stored. ये सभी path है जो store कर रहा है, सभी softwares के path है. Similarly, there is a particular variable called as a class path, which is used to store the path of all the dot class files. It is used to store the path of dot class files. So जहां पे भी आपके dot class files रखे गए हैं, उनके path आप इस variable में रख सकते हो. It is called as the class path. On Windows, अगर आप Windows पे होंगे, so you have to set the class path, and to set the class path you have to say set class path. Just say it in this way. Let's say अगर मैं उसके आगे कुछ नहीं देता हूं, if I do not write anything after this, set class path के आगे कुछ भी नहीं लिखता हूं, अगर मैं hit enter करता हूं, एक can you see it says the environment variable class path is not defined. The environment variable class path is not defined. क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने set ही नहीं किया उसको. So far I haven't set anything into the class path right now. So what I'm going to do is I'm going to set something into it. And what I'm going to say, I'm going to say all the dot class files. Look at that. All the dot class files are kept inside this bin directory. लेकिन ये bin directory किधर है? From the current folder, from this src, go back to the previous directory, and inside this bin we have all the dot class files. Inside this bin we have all the dot class files. Hit enter. Notice it. When I say only set class path, it was saying environment variable class path not defined. But now I'm saying set class path equals to dot dot slash bin. यानी कि मैं इसको बता रहा हूं कि सभी डॉट क्लास फाइल्स उस बिन के अंदर है. नाउ चेक व्हाट इज देयर इनसाइड दिस क्लास पाथ. आप जरा चेक करो इस क्लास पाथ के अंदर क्या है. इफ आई एंटर, इज इट सेइंग क्लास पाथ के अंदर है डॉट डॉट स्लैश बिन. दैट मींस इट इज टेलिंग मी दैट फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी, यानी कि जिस भी डायरेक्टरी में होंगे, इट विल गो टू द पेरेंट डायरेक्टरी, इट विल सर्च फॉर द बिन डायरेक्टरी, एंड इनसाइड द बिन डायरेक्टरी व्हाट डू यू हैव is nothing but your dot class file, the program01 dot class file. This is how you have to set the class path. And every single time, whenever you are going to create a new folder, or whenever you are going to open a new terminal, again you have to set the class path. It's a temporary variable that gets created. अगर आप चाहते हो उसको परमानेंटली क्रिएट करो तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाकर के क्रिएट करना पड़ेगा. So this is temporary one that has been getting created for execution. Now once you set that, now you try the same command. अब आप यहाँ पे जाकर के वापस से लिखो, this is going to be Java and this is the program01. Now tell me, does this terminal or does this environment now knows where the dot class file has been kept? Initially क्या उसको पता था? Was it knowing where the dot class file was? No, it was searching it within the same directory. But what you did was you set a class path over here by telling him कि अब वो सारे dot class files आपको bin में मिलेंगे. Do one thing, go into the bin, आप bin में चले जाओ और bin में जाके जरा चेक करो कि वहां पे dot class file present है. Now this Java, whenever the JVM is going to execute this code, the JVM will search into this bin directory and will get that dot class file and will execute the code. Hit enter and check this out. Is it saying hello from program1? Is it giving me the same error by saying class not found exception? No. अब ये error नहीं आएगा. But now it is knowing that where the dot class files has been kept. So these are the steps that you need to follow whenever you are going to create the directories and when you want to keep the compilations, when you want to keep the dot class file after the compilation into the bin, and whenever you want to execute it. These are the steps that you need to follow. These are the mandatory steps. Let me write it down for you. So whenever you are going to compile it, compilation के बाद, the first thing that you need to do is set the class path. Set the class path to provide, or we could say to tell the JVM where dot class files
where the dot class files are stored. To tell the JVM where the dot class files are stored. So first thing is like you have to do this. Next one, or we could say the command for it is going to be compilation command. Sorry, not the compilation command. The command to set the class path is set class path equals to dot dot slash pin. This is the command that you need to keep. Next, execute the code. Now, how do you execute the code? You are going to say Java. That's going to be program 01. And that's done. That's done. Let me know. Is it clear to you? And this is the way it has to be done. यानी कि यहाँ पे आप दो commands को use करना है. First is like Java C -d. Second one is set class path. Then the entire things works in the same way. Now for you, आपके होमवर्क के लिए या फिर आपके असाइनमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस हो, इसलिए you are going to create that program 02 जिसमें ये 1 डॉट क्लास 2 डॉट क्लास होगा. The same example, literally पहले हम लोगों ने एक ही जगह पे कचरा किया था. Into the same folder we have created the entire thing. Now you will create that particular, we could say program 02.java into the src. उसका 1 डॉट क्लास 2 डॉट क्लास यहाँ पे क्रिएट होगा बिन के अंदर एंड यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट. ये आपके लिए है. दिस इज एन काइंड ऑफ एन असाइनमेंट फॉर यू. ये आप करके देखो. अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस इट. आई नो दैट. ये आप करके देखो. Let me know. Will you be able to do that? So maybe I will say it over here. So homework. It's a kind of a homework. Complete or create the program 02 example and test it. And test it. Let me know. Will you be able to do this? क्या आप उसको करोगे? Yes, करना ही पड़ेगा. Otherwise, how you are going to practice it? Fine. So, have you understood that what are the efforts that we need to do when we go for the editors? यहाँ पे ये काम कैसे हो रहा है वो बिन के अंदर प्रोग्राम के अंदर ये प्रैक्टिस से तो आ जाएगा. बट हैव यू अंडरस्टूड द एफर्ट्स? क्या आपको वो समझ आया कि कितना पेन है? What are the efforts that we need to give if you are trying to divide this code into the src and b? Why there's an error into the file? वो errors को ignore करो because it's generally we could say the structure of the Java that is recommended that I'm not following. कि जो structure यहाँ पे recommended है वो मैं यहाँ पे follow नहीं कर रहा हूँ and that's the problem. अब वो structure क्या है, what exactly the things are, अब ये भी करने लगेंगे तो again there are going to be few more complexities when you're going to compile it. तो ignore करो, it works. That's why it is very important to understand how Java works, how Java behaves. That's the reason. ठीक है. हाँ, for single so much efforts, that is what I'm saying कि यही वो उसका limitation है. See, this is the exact limitation that I'm talking. जब मैंने यहाँ पे लिखा कि there are some limitations, तो वही उसका limitation है. सबसे बड़ा problem तो वही है that whenever you are going to do the compilation, the execution, so the editors are not going to help me. वो help ही नहीं करते. They just create these problems. ये बस problems को create करता है and the problems I have to solve it on my own. Now this is where your IDs are going to help you. ये आपके IDs आपको यहाँ पे help करेंगे. So what I'm going to stick with is STS today. आज मैं STS को stick करता हूँ. We will start with this. Maybe tomorrow I will also show you with the IntelliJ. या फिर टाइम मिला तो मैं IntelliJ के साथ भी दिखा दूंगा. दोनों के साथ दिखा देता हूँ. थोड़ा सा वर्किंग बिहेवियर अलग है, but it is the recommended way that you have to deal with it. Let's start with an STS. So once you have downloaded an STS, जब आप STS को download करोगे, when you go over here, when you say STS download, so actually it gives you a zip file. 4.22 रिलीज हो चुका है. सॉरी, डाउनलोड्स के अंदर you can go for Spring Tool Suite 4. आप इसके ऊपर क्लिक करो. You can just go for the Eclipse type. यहाँ पे जाकर के you can download whatever the zip file that you want. So Windows के लिए अगर आप डाउनलोड करोगे, you just download it, then extract it. extract करने के बाद आपको डायरेक्टली वहां पे एक आइकॉन मिल जाएगा Spring Tool Suites का. So click on that. आप उसके ऊपर क्लिक करो. I have the Spring Tool Suite 4 and you have to choose a workspace for it. जब भी ये लॉन्च होगा, whenever it is going to be launched, so सबसे पहले it asks you कि where do you want to keep this particular we could say projects. ये projects सारे कहाँ पे रखना चाहते हैं. So I'm going to browse over here. मैं यहाँ पे करता हूँ browse and I'm going to say that I want to go for we could say not this one. So I have to go inside we could say your batch. That's the modeler one. So that's the core Java 17. This is my day 01. तो ये जो day 01 नाम का directory है. So this is where I want to create my project. And this is where I want to create my project. तो यहाँ पे इस डायरेक्टरी को चूज करो एंड से सिलेक्ट फोल्डर.
सो दिस इज द वर्कस्पेस. वर्कस्पेस इन द सेंस एक ऐसा डायरेक्टरी जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो. जैसे डे वन नाम का ये जो डायरेक्टरी है VS कोड में आपको दिख रहा है, द वन दैट आई हैव ओपनड अप, जिसके अंदर डेमो 01 नाम को ऑलरेडी क्रिएट मैंने करके रखा है. day 01 help, this is a file, maybe these are the different classes, whatever this I have created. तो ये day 01 is my today's day directory, the workspace I am working into. तो ऐसा ही एक वर्कस्पेस आपको STS में चूज करना पड़ेगा. यू हैव टू चूज इट. सो आई हैव सेड दैट दिस day 01 विल बी द फोल्डर इनटू व्हिच मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैन बी स्टोर्ड. आप ब्राउज करो, आपको जहां पे रखना है रख सकते हो. यू हैव टू ब्राउज इट एंड यू हैव टू स्टोर इट. देन वंस इट इज डन, क्लिक ऑन लॉन्च. आप लॉन्च के ऊपर क्लिक करो एंड जस्ट वेट फॉर इट. एज आई सेड STS इज बिट स्लोअर, थोड़ा सा वो स्लो है. सो whenever you are going to open it, whenever you are going to launch it, it is going to take some time. थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है. ये हमेशा करना पड़ेगा जब STS ओपन करेंगे. यस, जनरली व्हेन यू ट्राई टू क्रिएट द प्रोजेक्ट्स डे वाइज, जैसे अगर आपको पता है कि आज का दिन का प्रोजेक्ट सारे मुझे अलग फोल्डर में रखना है, कल के दिन के प्रोजेक्ट अलग फोल्डर में रखना है, सो एवरी टाइम यू हैव टू चूज अ वर्क स्पेस. ए सेम फॉर द इंटेलिजी ऑल्सो. सो ये दोनों के लिए सेम ही है. वर्क स्पेस हैज टू बी चोजन. डन. Now once the we could say Spring Tool Suite has been opened up, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको हर बार कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी. हर बार. So it is like literally every time. So let me go over here. Let me minimize जो विंडोज नहीं चाहिए उनको करता हूँ minimize first. Next, on the left hand side, you are able to see it says create a Java project. Not only that, अगर आप फाइल में जाओगे, you click on new. Here also you get the option as Java project. So आप चूज करो, you click on the Java project over here or you click from file. It will ask you what is the name of the project. आपको यहाँ पे पूछेगा आपको प्रोजेक्ट का नेम क्या चाहिए. So maybe I'm going to say the name is going to be demo 02. demo 01 नाम का फोल्डर ऑलरेडी है. So I'm going to create the folder as demo 02. Whatever the name that you are going to give to this directory, ये आपका ये वाला directory है. The directory that I have created earlier. जैसे मैंने demo 1 create किया, उसके अंदर src bin create किया. So exactly the same thing that I'm going to create inside this STS. So I will say this is demo 02. Then it asks me that which particular Java's version that you want to target. यानी कि ये भी ऑप्शन आप मुझे आईडी देता है जो मुझे बाय डिफॉल्ट VS कोड नहीं देता था. सो बाय डिफॉल्ट इट वाज यूजिंग दैट पर्टिकुलर Java 11 ओवर देयर. सो इट आस्क्स मी कि आप कौन से जावा वर्जन को टारगेट करने वाले हो, सो दैट बेस्ड ऑन दैट आई विल गिव यू द इंटेलिजेंस. यानी कि उस बेसिस पे ये आपको इंटेलिजेंस भी देगा. अगर आप जावा के नेक्स्ट वर्जन यानी कि 11 तक चूज करोगे, बिकॉज आई हैव द JDK एज JDK 11, तो अगर आप 11 तक करोगे तो 11 के सारे क्लासेस में आपको इंटेलिजेंस में आ जाएंगे. इफ यू गो फॉर द जावाज प्रीवियस वर्जन 5, तो 5 के क्लासेस आपके इसमें आ जाएंगे. इवन द कंपाइलेशन एरर, द रन टाइम एरर्स, वो भी आपको उस हिसाब से दिखेंगे. सो इवन दिस द आईडी प्रोवाइड्स यू द फीचर विद. सो आई एम गोइंग टू से आई वांट टू टारगेट द जावा SC 1.8. मैं कह रहा हूं कि जावा 8 को मुझे टारगेट करना है, बिकॉज इट्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट हैज बिकम द फंक्शनल प्रोग्रामिंग. सो यू चूज एनी ऑफ द वर्जन्स, एनी ऑफ द इन द सेंस टिल जावा 11 ना, टिल जावा 11, क्योंकि मेरे पास JDK 11 तक का है. So you choose that particular, we could say Java SE 1.8 or 11, whatever you want, and then you have to click on finish. अगर आप next करोगे तो भी चलेगा. It is just going to tell you that it is going to create an SRC for you. And not only that, the default output folder it is telling you it is going to be demo 02/bin. यानी कि by default it is going to create an SRC for the source code and it is going to create a bin directory for the .class files. यहाँ पे जाकर के करते हैं फिनिश. यू क्लिक ऑन फिनिश एंड इट हैज बीन क्रिएटेड. उसने वो demo 2 नाम का फोल्डर क्रिएट किया. इनसाइड दैट demo 2 अगर आप नोटिस करोगे, इफ इनसाइड दिस demo 2 इफ यू नोटिस समथिंग, यू आर एबल टू सी दैट SRC डायरेक्टरी. नॉट ओनली दैट, वो JRE का सिस्टम लाइब्रेरी द rt.jar दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है. सो वट एवर द डॉट क्लास फाइल्स दैट वी हैव इनसाइड इट, नोटिस करो इनसाइड द java.base, इनसाइड द java.lang, ये व्हाट डू वी हैव, ऑल द डॉट क्लास फाइल्स. दिख रहे हैं क्या? ये आपकी वो कोर लाइब्रेरी है. दिस इज योर कोर लाइब्रेरी, द कोर लाइब्रेरी दैट इज अवेलेबल विद दिस JRE, विद दिस जावाज रन टाइम एनवायरनमेंट. सो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर क्या था, you look at this, what do we have inside the JRE? Inside the JRE we have, inside the JRE we have the rt.jar, the core libraries plus the Java virtual machine. यानी कि जो वो JRE यहाँ पे लेके आ चुका है, लाइब्रेरी लेके आ चुका है, उसके साथ साथ there is also the virtual machine that is present inside this Spring Tool Suite, inside this STS, जो कि हमारे JDK को टारगेट करेगा. This is what it is going to do. Who is going to do? The ID is going to do on its own. ये ID खुद करने वाला है. Understand it? ID खुद करने वाला है. अब मुझे करने की जरूरत नहीं है. Now what I need to write is only the code. SRC में जाओ, create a particular class, say new, notice it. चाहे तो आप उसको नोटिस भी कर सकते हो.
Go inside that particular src, right click onto it, say new, this is going to be the class. आप यहाँ पे choose करो, this is nothing but a class. क्लास का नाम क्या देना है, whatever you want to choose you can choose it. I will say that's going to be the program 01, that's going to be the program 01. Whatever the name of the class that you are given, do you want the main inside it, क्या तुमको main चाहिए उसके अंदर, yes, तो click on it. तो यहाँ पे जाकर के बस click करो, whatever you click on finish, आप बस उसको finish कर दो. Look at that, it is going to create a particular class for you. थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह आपको कम दिख सकता है, सो वट एवर द फॉन्ट दैट इट इज गोइंग टू बी लाइक शोइंग इट इन अ प्रीटी स्मॉल वी कुड से फॉन्ट, इट हैज टू बी इंक्रीज्ड एवरी सिंगल वर्क स्पेस. जैसे ही वर्क स्पेस चेंज होगा, ये फॉन्ट का स्टैंडर्ड, उसका लेट्स से जो भी आपको कम ज्यादा चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी चेंज्ड. चेंज कहां से होगा, so you have to go into the project, you have to go into the properties, font, sorry, not here, preferences. So this is going to be, this is going to be, Aricha, where are you? Where are you? Ah, here it is, preferences. That is what I was looking for. So this is the preferences, going to the general, going to the appearance, यहाँ से जाना तो यहाँ से, या फिर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो. You just have to say font, यहाँ पे जाके लिखो font, आपको मिल जाएगा colors and font. जनरल में ही होता है, जनरल अपीयरेंस के अंदर. You just click onto it, go into the basics, basics में नीचे scroll करो, there is a text font, और यहाँ पे आप चूज करो, आपको bold चाहिए, आपको 18 चाहिए, 20 चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे, you just choose it, click on apply, apply and close, and you get the exact font. आपको चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो. So this is the way that you can increase the font size. तो आपको ये चाहिए ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस करोगे तो भी चलेगा. सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द वे दैट यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द फॉन्ट. लेकिन ये डू रिमेंबर दैट एवरी टाइम यू चेंज अ वर्क स्पेस, जैसे वर्क स्पेस चेंज होगा, द सेटिंग्स हैज टू बी अप्लाइड वंस अगेन. ये हर बार सेटिंग्स अप्लाई करने पड़ेंगे चाहिए तो, अदरवाइज यू आर हैप्पी विद द फॉन्ट, देन दैट्स ग्रेट. Now inside this main, what do you want to write? You want to write that hello world once again. So say system.out.println. You can just choose that, and you can say this is like hello from STS. That this is the project. This is an ID that I'm using. This is an STS that I'm using. So say hello from STS, and you can start with it. हर एक जगह अगर notice करोगे, it has to be exactly in this way. हमने जितने भी क्लासेस लिखे थे, whatever the classes that we wrote, उस क्लास से पहले कहीं पे भी आपको पब्लिक वगैरह कुछ दिखेगा नहीं. So here also, whatever the class that I'm going to create, I'm going to remove that public. Remove कर दो. Doesn't matter. Remove कर दो right now. Now tell me, what is the next step that we have to do? Class लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा? इसके बाद I want to execute it. क्या करना पड़ेगा? What I have to do? चलो fast. Tell me, what I have to do? Don't you think you need to compile? Keep the particular dot class file into the bin and then set the class path. Class path set करने के बाद उसको execute करो. Do you remember the steps? ये सभी वो steps थे. What are the steps? The steps are nothing but you have to do the compilation. Compilation करते वक्त उसको बताओ, bin में रखो, set the class path, execute the code. अब ये सारा चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, because if you look at this particular demo 02, तो इस demo 02 के फोल्डर स्ट्रक्चर को जरा चेक करो. Check the folder structure. Within that ID, are you able to see any bin directory over here? क्या आपको कहीं पे भी bin directory दिख रहा है? नहीं दिख रहा. But if I go at the physical directory, अगर मैं उस physical directory को notice करूंगा, look at that. This is the demo 02 directory. If I go inside this demo 02, am I able to see this both these directories bin and src? ये मुझे दोनों भी दिख रहा है, src भी दिख रहा है, bin भी दिख रहा है. Also some hidden files like dot settings, dot class path, dot project. Can you see the dot class path भी यहाँ पे आ चुका है? यानी कि सारा चीज आईडी ने ऑलरेडी बना के रख दिया आपके लिए. एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड. इफ आई गो इनसाइड दिस बिन, एक कैन यू सी दैट program01.class, मैंने कहीं पे कंपाइल भी नहीं किया. इवन आई हैवंट कंपाइल्ड इट. व्हाट द आईडी इज डूइंग इज द मोमेंट यू सेव अ फाइल, द मोमेंट यू सेव अ फाइल, जैसे आप फाइल को सेव करोगे, immediately it creates its dot class file, immediately it compiles it code. Can you see how fast it is? जैसे जैसे मैं कोड लिखते जाता हूं, the moment I'm trying to save that file, अगर उसके अंदर कोई भी कंपाइलेशन के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, immediately the dot class file is going to be created. So यहाँ पे भी नोटिस करो, the dot class file is already been created. demo 2 के अंदर inside this bin the dot class file already exists. Now how do I execute it? उसको रन कैसे करो? Now to run that particular code, अगर आपको कमांड्स देने की जरूरत नहीं है. You don't have to give any commands because you just have this run button and notice it.
आपको ऑलरेडी रन का बटन मिल चुका है. सो क्लिक ऑन दैट रन बटन एंड इट विल आस्क यू, डू यू वांट टू एग्जीक्यूट द जावा एप्लीकेशन इन कंटेनर. कंटेनर इन द सेंस अगर आप कंटेनराइजेशन करते हो तो, जो कि हमें अभी यूज भी नहीं है. सो इट इज सिंपल जावा एप्लीकेशन. आप पहला वाला चूज करो, इट्स अ सिंपल जावा एप्लीकेशन. क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन ओके, एंड यू विल बी एबल टू सी दैट हेलो फ्रॉम एसटीएस. यानी कि वंस यू गो फॉर एन आईडी, द स्टेप्स ऑफ दिस कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, सेटिंग द क्लास पाथ, ये सारे एफर्ट्स वो खुद आईडी आपके लिए लेगा. नॉट ओनली दैट, व्हेन यू आर वर्किंग विद द प्रोजेक्ट्स, अननेसेसरी फोल्डर्स आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, सिर्फ एसआरसी दिखेगा. एंड इनटू द एसआरसी यू विल बी एबल टू सी ओनली द जावा फाइल्स. बाकी सारे बिन का काम वो खुद ब खुद करेगा. एवरीथिंग इट इज गोइंग टू डू ऑन इट्स ओन. लुक एट दैट. That's why it is recommended to go for the IDEs. Let me know. Is it simple to work with the IDEs now? Is it simple to work with the IDEs? Yes. अब ये next वाला भी करके देखो. So this is like I want to go inside this particular SRC. I want to say this is going to be a new class. Class का नाम मुझे यहाँ पे देना है. Let's say program 02. Hey, what's the name of the class? The name of the class is going to be program 02. So click on finish. Now inside this class, I'm going to create a class called as a class 1. यहाँ पे क्लास मैंने क्रिएट किया एज अ क्लास 1. क्लास 1 के अंदर मुझे क्या चाहिए था? सो लेट्स से क्लास 1 के अंदर मुझे चाहिए था me. Maybe whatever we could say the system.out.println that you are going to write, you can write it. We could say inside one class. That's what you are going to say. Exactly like this, you want to create it one more class called as a class 2. Exactly जो हम लोगों ने create किया था. So you can say this is going to be class 2 inside 2 class and you can just execute it. तो मुझे बताओ, जैसे मैंने सेव किया for this program 02, can I say that both these dot class files are already been created? ये भी compile हो चुका है. अरे is it already been created? Yes. जाके notice करो. Notice it. If I go inside this demo 02, inside this bin, do we have the one dot class and two dot class? ये मिल गया. Can you see how simple it is now? कितना सिंपल है. यानी कि द एफर्ट्स दैट यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट, जो एफर्ट्स आप सोच रहे हो, जो होमवर्क मैंने देके रखा है कि सर ये हर बार करना पड़ेगा, इट इज सो डिफिकल्ट, क्या क्या करना पड़ेगा, इज दिस एफर्ट्स नीड्स टू बी टेकन व्हेन यू गो विद द आईडीज. क्या वो आईडीज के साथ उतना एफर्ट्स है? नहीं है. सो द आईडी नाउ टेल्स यू that you just focus on learning Java, you just focus on doing the development, rest all the things I will do it. ये compilation और ये जहां पे प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है, द एंटायर प्रोसेस हैज बीन ऑटोमेटेड बाय द आईडी. आईडी कहेगा आई विल क्रिएट इट, आई विल फॉलो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, आई हैव ऑलरेडी ऑटोमेटेड इट फॉर यू, यू जस्ट फोकस ऑन डेवलपिंग द थिंग्स. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टिक विद द आईडीज. इसलिए हम लोग नोटपैड या फिर इसके पास नहीं जाएंगे. वी विल स्टिक विद द आईडीज. Is the purpose of IDs now clear to you, and how to create the projects? Is it clear to you? Are is it clear to you guys? इसको रन करना है. Even you can run it. Look at that. Click on run. Now observe. When you are going to run it from the command prompt, you have the option to choose. यानी कि आप commands देते हो वहां पे Java 1 और Java 2 या फिर Java program 01. You have the option to decide which main is going to execute. अगर मैं यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या रन होगा? Is it going to execute the program 01? Is it going to execute this one or is it going to execute this two? ये इस STS को कैसे पता चलेगा? क्या वो मेरा दिमाग पढ़ सकता है? Is it going to like go inside my brain and decide? या फिर वो मेरे आंखों को देख के पता करेगा कि अच्छा ये वन क्लास की तरफ देख रहा है तो वन एग्जीक्यूट करो? नो. Now this has to be given as an information to this program. If I run this particular code, look at that. If I run this particular code, every time it runs the first program, hello from STS. वो हमेशा hello from STS ही run कर रहा है. If I want to run this program 02, I have to right click on it and say run as, sorry, कहाँ पे गया? So this is going to be the main, run as, run configuration. Why run configuration it is giving me? Run as, run configuration. चलो ठीक है. It has to be given. यहाँ पे जाकर के you can observe that this Java application is actually having this program 01 as an instruction. अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इनिशियली इट वाज गिविंग एन ऑप्शन कि वहीं पे बताता था कि कौन सा क्लास यूज करना है, बट राइट नाउ यू हैव टू ओपन द रन कॉन्फ़िगरेशंस. और यहाँ पे नोटिस करो, इनसाइड दिस रन कॉन्फ़िगरेशन जावा एप्लीकेशन के नीचे एक ही प्रोग्राम है. इट सेज प्रोग्राम 01. व्हाट यू डू इज यू डबल क्लिक ऑन दिस जावा एप्लीकेशन. आप इस जावा एप्लीकेशन के ऊपर डबल क्लिक करो. नाउ इट सेज आपके पास वो वन भी है. यानी कि किसी भी एक क्लास के ऊपर विच एवर क्लास इज गोइंग टू हैव द मेन, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके यू जस्ट गोइंग टू द रन कॉन्फ़िगरेशन, double click on it
and now it knows which program to run. अब उसको पता है कि कौन सा प्रोग्राम को रन करना है. So it is going to be 1. You can click on run. अब वो रन हो गया. It says inside 1 class. Suppose मुझे 2 के लिए करना है. Once again, do the same thing. Inside this 2, click करो, right click. You just have to say run as. You just say run configuration. Into the run configuration, double click on it. And look at that. It is creating one more. And the main class it is going to say is going to be like 2. यहाँ पे जाकर के आप 2 सिलेक्ट करो. नहीं तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो. इट विल गिव यू द ऑप्शन कि 1 चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, 2 चाहिए. आप यहाँ से चूज कर सकते हो. क्लिक ऑन ओके. whatever the class is going to be, you just choose it and click on run. आप उसको रन करो. It says inside 2 class. And if there are going to be multiple classes, अगर यहाँ पे multiple classes होंगे, so for this multiple classes you can decide which application to run. So click on the run button and look at that. जो भी last class run हुआ था, it is going to run the same class. If not, you can even click on the side arrow. यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो and you can decide it over here. अगर ऑलरेडी यहाँ पे आप क्लासेस आपके बन चुके हैं, यानी कि अगर आपने रन कॉन्फ़िगरेशंस में जाकर के look at that, रन कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के अगर ऑलरेडी आपने क्रिएट करके रखा है, नाउ यू कैन डिसाइड व्हिच क्लास टू रन, सिलेक्ट दैट एंड जस्ट रन. आप उसको रन कर सकते हो. कैन यू सी दैट? अब हर बार मुझे यहाँ पे जाकर के कमांड देने की जरूरत नहीं है. एवरी टाइम आई डोंट हैव टू से अच्छा अभी क्या रन करूँ, जावा प्रोग्राम, अभी क्या रन करूँ, जावा 1, जावा 2. ऐसे हर बार लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट सिलेक्ट इट, रन इट, सिलेक्ट इट, रन इट, सिलेक्ट इट, टेस्ट इट. दैट्स हाउ द आईडीज आर गोइंग टू हेल्प अस. लेट मी नो, इज इट क्लियर सो फार? Very good. So this is how the STS is going to help you. You can start using the STS. और अगर किसी को चाहिए, so if someone is interested into the IntelliJ, you can definitely go for IntelliJ and you can start working with it. आप IntelliJ के साथ भी काम कर सकते हो. I would recommend कि आप दोनों भी ट्राई करो. आपको जो कंफर्टेबल लगे, you start using it. I will use it like मैं STS अभी यूज करूंगा थोड़े दिन के लिए till we complete the concept of packages. बाद में maybe we can shift to the IntelliJ. थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अलग दिखता है. The project structure that you're able to see थोड़ा सा अलग दिखता है, but it is way too smoother as compared to STS. STS से थोड़ा स्मूथ है. अंडरस्टैंडिंग के लिए बिन SRC दिस इज द बेस्ट थिंग. ये थोड़ा सा अच्छा है. इट इज मोर सिंपलर, बट डेफिनेटली यू कैन वर्क विद IntelliJ. अगर कंसेप्ट समझ आ चुका है, यू कैन. लेट मी नो, इज इट क्लियर सो फार? आर दिस थिंग्स क्लियर? Fine. So I think for today this is more than sufficient. आज के लिए इतना काफी है. So you work on to it first, क्योंकि आज आपको करने के लिए या फिर ये 2-3 दिन next there is going to be a lot of things for you. So there are going to be like you have to do the installation, you have to understand the theoretical part जिन्होंने नहीं किया उनके लिए, and you have to solve it. यानी solve in the sense you have to actually do it by compilation from the command prompt as well as from the STS. यानी कि जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएंगे STS के इंस्टॉलेशन के, वो भी आपको सॉल्व करना है. तो ये सारा चीज अभी नेक्स्ट 2 days में यू कंप्लीट इट, सो दैट फ्रॉम मंडे we can start with the next part of Java in the sense now we can start understanding प्रोजेक्ट बना करके, यानी कि इसके ऊपर कमांड कंपाइलेशन के ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए you will be able to understand कि कितने क्लासेस बना सकते हैं, what is a public class, why the name of the class and this has to be same, main के variations, all those things we can start working with from Monday. So what